a moment. Okay, great. Now I'm going back and making you as making a host, and that's it. And now you can share the things. Now his recording is started. We have to start the recording before. Yeah, perfect. The size is okay? Yeah, this is perfect. This is perfect. Yeah. And hello, guys, we are already on here right now. So I will not wait anymore for someone to come. First of all, welcome Ramchandra to accept our offer. It's a privilege for all the students to interact with Ram. Ram was senior to me in FTII in the direction department. And I have already shared his profile with you people to understand his background. Another teacher on an alternate week would be joining you next week. And then alternately, we will fluctuate between Ram and Ranjan. Both start with R. So today, some of the serious students, roughly around 8-9 students, have taken the pain and submitted the assignment, which is a good sign. Rest of them are slowly waking up. It will take some more time for them. But as I said, that it's up to them. If they really want to get benefited out of this class, they have to work hard, because it is no fixed answers are there. Everybody has to think over these answers, and that is what FTI look for. The thinking skills and imaginative power. These are the two things in a direction department. FTI and SRFTI look for it. So over to Ram. First, we will go by the sequence, the way students have sent their assignment. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have put all these things in the order. And at the moment number comes, student would read out their assignment, and Ram would be commenting on it. Okay. So this is how we'll go about it. So Ram, you can start, give a little introduction, how you would like to go about and all that. Though I have explained the process, but it's over to you. Yeah. So, good evening, friends. I hope I'm clear. Yes, very much. Yeah, very much. I'm Correct. audible to everyone. That's Yes. nice, because these technical things sometimes have some glitches and stuff like that. Okay, so we go right away. The way we're going it, as Naresh suggested, that we go by the names, the file that are there, and people would be reading it. By and large, I would comment after the answer is answered. But if there is something specific to be told in the middle of the answer, I would request you to stop and don't feel offended. Because I'm an old man, I tend to forget things like that, and then I will comment upon it, and then maybe we'll have a discussion. Uh, I want this to be a discussion. No? As Naresh ji told, there is no such thing as a rocket science in direction and filmmaking. Everything is everything. If you like Shah Rukh Khan, you like Shah Rukh Khan. I mean, I can't do anything about it. I might not like Shah Rukh Khan, but that's the reality for you, you know. So each one to his own. What we are looking for is the analytical skill of the person. Yeah. So we'll start right away, right? Uh, whose name is first? Rajji. Yeah, sir. Good evening. It's me. Yeah. Hi. Hi, Can sir. can you read it out? Your first question. Yeah, the question is you have been asked to make a documentary film on the Okay, Russia-Ukraine war. just a one suggestion. The person who is speaking it out, should put on their video, at least that person, so that there could be a face-to-face interaction. Though it will be much more nicer if somebody can switch on the video, particularly the one who is reading the question. Okay, sir. Just a second. Sure. And this is valid for everyone. Rest of the time you can be off the video, but the person who is reading has to have some face-to-face interaction. Yeah, please carry on. Yeah. So, the question is you have been asked to make a documentary film on the Russia-Ukraine war. List out 5 important aspects which you will cover in this documentary film. Yeah. So actually, sir, I don't know much about on this topic, so I thought that I'd research about it and then come up with an answer. So I left it blank. Yeah, that's how you go about it. First, you do the research, and that's the Yeah. right way to go about it.
Yeah, Yeah, sir. yeah, So can I move to question Here 2? I would make a comment brief. Remember, this question was asked last year in the examination. So Okay. when you're sitting in the examination and this question would come, what kind of research are you going to do? Nothing. Okay. So this is a current affair question which a director should be already aware about it. And Yes. then on the spot, you should be able to quickly, should have a practice that what kind of pointers you should be ready with and write down. So this is indirectly, they are checking out your current awareness about what is going on in the world. Are you getting my point? So in Yes. between, I will not be participating here. It will be the Ramchandra who will be taking care because I'm taking a leave. So I thought quickly I'll make this comment. Thank you very much. Please carry on, Ram. yeah, yeah. Very much, very much. Yeah, Okay, sir. So the question 2, if you wish to make a documentary, you should automatically go to fiction, and if you want to nourish your fiction, you have to come to reality. Write your arguments for or against the quote. yeah. So I have to read the answer as well, right? That's Yeah. So I agree with the above quote. I believe that for creating a documentary, one has to dive into fiction as it links the story completely and continues to engage the viewer. For a documentary that engages its audiences and keeps them hooked till the very end stands as an amazing feedback. As for the latter part of the statement, I would say that yes, for nourishing the fiction, we may have to come to reality, as reality helps them relate to the story well. If we talk about documentary, I would say that the purpose behind watching any documentary is to gain information behind a particular subject that has always intrigued or fascinated the viewer. But the problem arises when it starts sounding or looking completely book oriented, and the viewer, on the other end, thinks that he would have rather preferred to read than to watch. So it becomes important for a documentary filmmaker to create engagement and improvise the content in a way that the viewer watches it till the end. A documentary film is expected to highlight the important points of the subject also. So, if there is a driving force of fiction behind the topic, then it becomes so much more fun to watch. As a filmmaker, our job is to tell stories, and ultimately, documentaries are also a subset of films. So, it would be commendable if we merge the two, as the byproduct of both would be an amazing watch. Talking about fiction films, I think reality provokes the viewer in ways that helps the filmmaker to know what should be the psychology behind writing the screenplay for their film. Fiction films, be of any genre, are also made with the intention of telling stories. So if there are fragments of reality in a story, then it will have an impact on our viewers, as reality helps to bond with others and give a message also to the viewers. It also helps them to know about the particular issue and get them in par with it as well. Suppose if we talk about a Hindi language film, Dil Dhadakne Do, a film by Zoya Akhtar, she has laid emphasis on the prevailing stereotypes that are residing in a particular section of the society as per my perspective. I think one of the message the film was trying to imply was that a woman has every right over deciding for herself and should not be seeking any permission for the same. As per me, a society such as ours, most adult women in every section is expected to seek permission for anything she does, either by her husband or by her parents or her in-laws, and it is something that is running from many generations, and this stereotype is so deeply spread that even some women think that it is the standard form of living. When a woman sees such a film, she realizes about the stereotype and feels good for the same, as there's her inner conscience that feels satisfied and happy as she starts considering it as a big deal from that. from that. Fine. So the question was, if you wish to make a documentary, you should automatically go to fiction. And if you want to nourish your fiction, you have to come to reality. So you Yeah. generally agree with that? Yes, sir. Yeah. So your argument with the fiction film was perfect. You know, Okay. so you give examples, which is a very valid examples what is happening in the society, and therefore that is reflected in the fiction film. That's a perfect. But
but when you come to the documentary, what's your view on documentary? What, sir? What Can is you your view on documentaries? What does it do? Sir, it puts highlights on the facts on general events that are happening in the world. So doesn't a fiction film also do that? It does. Something to think about, right? Yeah, You yourself have said Zoe Akhtar's film is reflecting a certain reality yeah. of the position of women in Indian society. Is that true, roughly speaking? Right? Yes, sir. So wouldn't we do that unless you figure out the fundamental difference between the documentary and fiction or the non-difference? Your answer would become if you do that, the answer will become very strong. For that, first you have to realize what you have to define for yourself. What is the reality that you're talking about? True. Yes, sir. True. So basically, normally, documentary is something that gives you information. If you talk about documentary, I would say that the purpose behind watching any documentary to gain information. Aren't they interesting and entertaining documentaries that we haven't seen? Sir, actually, I've not seen much documentaries. So, Yeah. So the whole idea is to when you're talking about documentaries, there are various modes of documentaries, and I, as a student, as an entry, as a prospective film student, or presently you are a film student, I would guess. Even if you're thinking about applying to a film school, you are a film student, so you should be learning more about it. yes, sir. There are various modes of documentary, as there are various modes of fiction. No. So within the fiction, there is a fantastic. The fantastic, and then there is a realistic fiction. So you'll have to keep abreast of all these things to have your answer very rounded off. Clear? Yes, sir. So, Anything sir, else? can you explain me the thin difference between a documentary and a reality fiction? What is it? There is a short fiction film. It is available on Vimeo called "An Incident at a Bank." Incident by the bank. Yeah, An incident by the bank. So that film is like what? It's a very short film, I think 10 to 15 minutes of length. And then the camera is just there on top of a floor and is showing the events that are happening in a street. There's a bank robbery that is happening, and there are two bystanders that are happening, and finally the robbers get caught. And there is no fictional cutting elements in that film. There is no dramatic fictional cutting. It's just seen as it is, as a reality, as a steady cam, not a steady cam. You see this camera there up there, what do you call the cameras? CCTV. The CCTV cameras. It's just acting like a CCTV cameras, as if capturing reality, and everything is happening in real time. There is no cutting Okay. involved, basically. Okay, okay. But it is all enacted. It is all Okay. enacted. So it takes the documentary feeling of it, but it is a fiction film. Okay, I got it. Okay. So on the Yeah. other hand, there is another documentary called The Body Beautiful. I was just watching it some days back. It tells about the story of the filmmaker and her mother, who has had this cancerous operation involved, in which she had to cut one of her private parts because of cancer and stuff like that. And that film is the story of the filmmaker and her real mother. But that is in the form of fiction. The only real character is the mother. So is this fiction or is this not fiction? Is it documentary? The world sees it as a documentary because so this is a very thin line of difference. So by and large, the difference between the documentary and a fiction film is that in fiction films, the location is not real and the characters are actors, by and large, simplistically speaking. In the Okay. documentary, the real characters are there and they are in real locations, basically. The issues are the same. You might have a feminist film in a documentary and in a fiction, but these are by and large moti taur pe, by and large simplistic. Definitely. Okay, sir. Clear? Clear? Anything else before we move ahead? No, sir. Yeah. So we'll go to the next one.
But I like the way you worked out the fiction thing. You gave examples and stuff like that. No? So that means that you haven't seen some documentary. You should better watch some documentaries, right? Okay, sir. Yeah. So the next question. Yeah, the question says, name a filmmaker, writer, artist, musical whose work has moved you deeply. What is it that you have learned from them that has influenced and inspired your creative thinking? So this is a bit of emotional answer. Yeah, Riveting. sure. So Sanjay Leela Bhansali, sir, three words and it sums it all for me. My love for films, as a matter of fact, for filmmaking would not have begun if it were not for him. I admire his work for the universe he creates, the universe of love. I feel his immense and pure love for the film he has translates on the screen. I feel all of his films have one commonality, and that is his beautiful way of telling stories of any genre, with love being the driving force. It is the minute detail that he entails made me realize that beauty lies in the smallest of things. Out of many of his works, my favorite film is Guzarish. The film is about filing a death petition, but preaches about loving life at every level and fighting till the end. It's a film about life, an iconic paradox, as per my viewpoint. Sorry. The film never supported self killing, even if Ethan, the protagonist, asked for was to die. The man celebrated life even if he could not walk or move. He was an epitome of love and was indeed a magic in itself. I personally, on my behalf, admire this character to the extremist level. He was full of life and zest, but all he got from life was the pain, and even when he knew nothing could change, One second. he One was second. One second. Before I forget, on my behalf, admired this character to the extremist level. What does it mean? that I admire him very much. Okay. Okay. Got it. Okay. Yeah. Continue. Please continue. He was full of life and zest, but all he got from life was the pain, and even when he knew nothing could change, he was gratitude he was grateful and gave his most enduring possession of the great magic secrets to the son of the magician who got him into this situation. In just a few words, I can hardly express what this film was to me and what it showed. But all this movie has taught me is to be grateful and to love your life, to be happy with what you get, and of course, to love truly, kiss slowly, forgive quickly, and never regret anything that ever made me smile, which is one of the most important dialogues from the film itself. To conclude, I would say that different things influence people differently. In my case, is the very essence of love which affects me, and that would be the source of my creative thinking. I feel if love is perceived in the correct sense, then happiness will automatically pave its way back in our lives. Many of his works, Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmavat, etc., are beautifully woven with eternal, forbidden, and courageous love, respectively. I have immense faith in Lord Krishna, and according to his preachings, my major learning is प्रेम ही जीवन का आधार है. So, Yeah. This is 500 words. Within 500 words. less than, it was around 400. Great. Great. This is a well written piece. You started off generally, and then you went into one film, and talked a little bit in detail about that film, and then went back to his other films. Uh, Yeah. and you figured out the theme of that particular film, which you like the most, and you have your personal preferences. The question was, of course, what have you learned? You know, the Yeah. question was not an appreciation of the film. Yeah. What have you learned from the film? And I think you have answered it Yeah. pretty decently, in the sense that uh, the theme of the film is this, and that is what I value the most, and that's what your argument is. You know, Hmm. now, uh, now there could be, for example, other themes in Sanjay Leela Bansali, for example. I mean that you might have noticed or not noticed. But if you have noticed it and you have deliberately not put them in, well and fine. But I would suggest you look into other things also. It is not just about love and Yeah, I the get it. celebration of life. I Uh, get. I got carried away with the answer, and then I started writing it in my way. I didn't I realize understand. it I much. understand. We carried away. We all get carried. The filmmaker should get carried away. That shows his or her passion. You know,
Yeah. It's a good write up. It's a good write up, and it's a well structured write up. Okay, Thank sir. thank you for this. We'll go ahead unless you Yeah. have something to add. No, no. So, in case anything comes up in my mind when you're reading up others' answer, can I ask you then? Yeah, sure. Yeah, so Okay. for all the participants, anyone who wants to, what is the process here? The process is what? You raise your hand. Is that it? Yeah, maybe. You raise your hand and you just at a given moment of time, you can butt in. Yeah. Yeah. Uh, So, we'll go the sir, ahead. yeah. So, Yeah. the next question I've answered in both English and Hindi. Is that fine? Oh, that is English. Uh, Yeah, the half part is character description is no, in no, no English. issues. No issues. Okay. No issues. Okay. Yeah. So, Read the question. okay. Question 4 says two strangers, one being old, the other one being young, meet at a roadside tea stall. Describe the two characters briefly and write dialogues between them. Character description: Old man, rough skin, decent smile, age around late 60s or early 70s, little male chauvinist but optimistic and receptive in nature, has led a life with lot of struggles and it can be seen by the scars on his rough skin. His decent smile shows that how much sorry, how much ever tough life had been, he had always dealt with it optimistically. Young man, youth of today's generation, smart and intellectual, is a rational person, not much good looking, but a different kind of charm oozes out of him, has led a decent life, is a final year college student. Yeah, this is a fair enough character description. This is a fair. What do you normally write in a character description? What are the two or three things broadly, moti taur pe? So, appearance, nature, and I guess that's it. Yeah. So appearance, when you say the physicality of it, Yeah. is physical, which you have done, the nature, that is a psychological, for example, or the psychological aspect of it, a little bit psychology you have given, Hmm. and then there is this social angle. What Hmm. causes the psychological life of a person, the physical and the sociological. No, Hmm. I what is sociological? The family you live in and the society you live in and all those things. No, I Hmm. think that particular sociology is little bit missing, at least a line or so. Yeah. Although you have said his decent smile shows much that how much our tough life is. Now, what is this tough life that he has gone through? We don't Hmm. know. Yeah. So a little bit of that would round off this characterization bit, But it's a Yeah. well worked out thing. Yeah. Clear? Yes, sir. Yeah. We'll go ahead. Okay. At the tea stall, old man is named Prem and young man is named Arav. So, Prem, that amp is a little bit extra. Prem and Arav to the tea vendor together, one cutting chai. Both look at each other and smiling. Prem, और बेटे कहाँ से हो? आरव, अंकल मैं दिल्ली से हूँ. प्रेम, अच्छा बेटा, वैसे आप जानते हैं यहाँ की कटिंग चाय कई साल पुरानी है, शायद बंटवारे के कुछ साल बाद से ही शुरू हो गई थी. So my intention behind this was that the man was aged around late 60s and 70s, so he was born after 1947, somewhere around 1953. Yeah. So that's why I It's put the it's line. clear. It's later clear in the dialogue. या शायद बंटवारे के कुछ साल बाद से ही शुरू हो गई थी. आरव, आपने बंटवारा देखा था? प्रेम, देखा तो नहीं था क्योंकि तब मैं पैदा नहीं हुआ था, पर उसके कुछ साल बाद ही हम जन्मे थे. हाँ, एक मिनट ऊपर ले जाओ. हम्म. हाँ. आरव, ओ अंकल, मैंने तो आज तक किताबों में ही सब पढ़ा था, बट आज तक इन सब पे बात ही नहीं हो पाई. बट मन था हमेशा से जानने का क्योंकि मॉम हिस्ट्री प्रोफेसर है, बट वो मोस्टली कॉलेज में बिजी रहती है. At the mention of his mother's work, Prem's face showed signs of discomfort and Arav noticed it. प्रेम, आपकी मॉम काम करती है क्या बेटा? आपके घर के बड़ों को दिक्कत नहीं होती क्या बेटा? आरव, अंकल मेरी मॉम ही घर की सबसे बड़ी है. मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे कुछ साल पहले, बट अगर आपके सवाल का जवाब देना हो तो नहीं.
Mom always says कि नाना जी कहते थे कि every person, irrespective of the gender, should study, educate themselves and be independent. प्रेम, बेटा बुरा मत मानना, बट शायद यही वजह हो सकती है कि आपके पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते हो, और मेरे हिसाब से शायद इसका असर आप पे भी आता हो. आरव, अंकल वो लोग सेपरेट क्यों हुए थे वो उनका पर्सनल मैटर है, बट मेरे डैड का भी हमेशा से यही मानना है कि वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, एंड द रीजन दे मेट ईच अदर वाज आल्सो बिकॉज माय डैड्स अ ह्यूज फेमिनिस्ट. और रही बात मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा साथ रह के झगड़ने से तो बेहतर है कि वो मेरे को अलग अलग रह के प्यार करे. प्रेम, बेटा इतने सालों से मैं तो यही सोचते आया था कि लड़कियों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं. आपकी बात में दम तो लग रहा है. मेरी बहू भी कई सालों से शायद नौकरी करना चाहती है, बट शायद डर के कारण बोल ही नहीं पाई. आपकी विचारधारा सुन के ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कुछ बदल गया, कुछ कुछ या कुछ अच्छे के लिए. आरव, वैसे सीखना तो मेरे को भी आपसे बहुत कुछ है. आप रोज यहीं आते हैं चाय के लिए? प्रेम, हाँ जी बेटे, मेरा घर पास में ही है, मैं वॉक के बाद यहीं आ जाता हूँ. आरव, कूल अंकल, कल यहीं मिलते हैं कटिंग चाय के लिए. बोथ लेट आउट अ क्यूट laugh at each other. That's Yeah. Uh, Tell me one thing. yeah. Pragji, na? Pragya. Ragi Srivastava. Pragya. Sorry. No, it's fine. Um, why would two persons who Mm. are unknown to each other open up each other as soon as this? Sir, Why would for example I would talk about my bahu and stuff like that to other guy, and why would that guy talk about his mom and his father and all of a sudden, oh, just because you're getting what I'm saying? actually, the opening line, I guess it was a too common opening line, one cutting chai together. They Uh, said it at the same time. So they smiled at each other and it created a sense of comfort for the two of them. So, it generated a vibe because of them. The older person starts कि बेटा कहाँ से हो, और आप जानते हो कि कटिंग चाय यहाँ से कितने साल से है. So I started it from there, and then yeah, so that I thought that was too soon, yeah. um, too soon. Imagine you traveling in a train and you meet some other person. It will take, for example, you're traveling to Delhi to Pune, for example, or Delhi to Calcutta. So it takes what, beyond Agra, beyond I don't know what are the stations. At least it will take half a day to open up like that. And by the evening, you're talking about everything in life. You So Yeah. you don't have the luxury of time here in the sense that the time is just that much. But this is one way of leading. Now, what is happening here is आपको ये पॉइंट पे आना है, इसीलिए तीन चार डायलॉग से आपने निपटा दिया, है ना? Mm. ना, we don't know his background, we don't know much about the boy's background and stuff like that. Yeah? So, so that is what is happening here. You should smoothen Yeah. it out. Basically, yeah. So, could I have written in this way, like a few conversations in between, then like a time lapse, and then they again meet, and then they start meeting on a regular basis? Could I have done that? Yeah, you could. That is just one way. There is just one way. There could be 100 ways of smoothing it out. That is a Yeah, beauty. because there was a limit of 500 words. So I also thought that it was too soon, but then again, I didn't think it in other ways. So So, yeah. so that's the power of editing. You say 500 words ke andar. You are already being an editor Mm. right now, and you're Yeah. already thinking in those terms, 500 words में कैसे बोलना है. You could have used a time lapse, within those 500 words. For example, in Hollywood dialogue writing, more than two lines of dialogue is by mandatory not allowed, or unless it's a speech or something like that. है ना? अब यहाँ पे we are like we are accustomed to the TV serial kind of a dialogue, Hmm. where people keep talking and stuff like that. So that kind of a thing. So if you can reduce, you could have reduced the dialogues instead of saying four Yeah. lines, Hmm. or 5 lines. The same thing could have been said in 2 lines. Hmm. So you could have got the screen time. I'm saying screen time. You could have got that screen time to something else. So these are the kind of things that you should be working on. Okay, sir. Clear?
Yes, sir. Yeah, there could be 100. Giving a timelines is just one of the aspect, one of the possibilities, but there could be 100 other possibilities. Yeah. Okay, sir. So what about the story? The story falls flat because there are certain mandatory things to the story. Believability. Because there is no smoothing it out, and because there is no believability, the rest of the because the edifice itself is not strong enough. Whatever you build the facade, it becomes just a shaky kind of a thing. Now you get your edifice right, you can make believe the audience anything in the world. You can make believe that you can fly. Hmm. You know? So since you edify, what are the edifices? Your edifices are these small little things that I talked about. Your beginning. You know, Yes, sir. clear? Yes, sir. So you have one more question? No, you finished. Oh, yes, sir. Yeah, but Thank you. yeah, you should work on your documentaries because even Okay. Ukraine thing, current affairs, you couldn't answer. You know? Mhm. What if I ask you to make a feature film on Ukraine? You know? Yeah. Cool. Thank you. Thank Thank you, you. sir. Yeah. Uh, Aslesha, na? Who's next? Is Aslesha there? So listen, guys, if you people go to sleep because somebody is talking right now and it is not your content, you need to understand one thing, that they are your competitors. How well competitors are preparing, it is a very, very important. Okay. So I will not butt in here now. If the Ashlesha Singh is not here, we'll move to another person. Simple. And then this will not be read again. Okay, third gentleman. The third is Mohin. Are you here? Mohin Pathan is here or not? Mohin is also not here, I believe. He is not here. He's another useless guy. I know him very well. No, I know him so well. I don't want to tell you right now, but it's fine. They are the people who are wasting the money of the parents. Yeah. Tanvi Tripathi. Are you Yes, there? sir. Okay, Yeah. Yes, show your sir. face first of all. Show your face. I've Wake up. switched on the camera while Very you good. announced the name. Yes. Okay. Loud and clear. Puneet Srivastava. Now, if you wanted to switch off your video and want to go to sleep and have the coffee, I have no problem, but you still can continue your videos. That is what I expected. So, Tanvi Tripathi, please carry on. ओके सर, वैसे मैंने लिखा इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. जो लिखा है ना ये एग्जामिनेशन में, या तो हिंदी में लिखिए आप, या तो इंग्लिश में लिखिए. Okay, one more thing I will tell you right now. I interrupt in between. If you cannot write in English right now, after spending your 12 plus 3 is equal to 15 years, which means you are sleeping for 15 years and did not bother to learn the English language. No, actually मेरा वो अलग don't होता give है. me an लिखती मैं इंग्लिश इंग्लिश परफेक्ट हूँ, don't लेकिन give हिंदी me बोलने में थोड़ी. explanation, but I am suggesting what FTI think. Okay. So I am will not a focus more racist. on speaking English. I am not a racist. I love Hindi. But if you write in Hindi, write in a bloody Hindi. There is a one girl who has written in Hindi, complete Hindi, okay, in between few words. But chances are that 50% teacher will make up his mind if you have written in Hindi that you 15 years you are sleeping and did not bother to learn the English language, which is the international language. This is what a teacher would think when he checked the paper. Maybe you are a Brahmgyani, that's beside the point. But I am just suggesting because you have spent the money and time to come over here. So make sure either Hindi or English. That's it. Okay. So what I suggest is you read whatever you have written in English, and अगर वो बातचीत में हिंदी आती है तो हिंदी आती है ना. That is okay, sir. So let me start. Yeah. So the first essay which I have written about making a war documentary on the issue like Russia-Ukraine war. So what aspects will I cover if I make a documentary? So here is my presentation. Like, creating a documentary on a subject related to the security, warfare, and the tension between the two nations like Russia and Ukraine is a very tough subject, because to understand the war between the two nations, first we have to understand the two nations first. Like,
if we are making a documentary on the war, so first of all we have to understand like what is the root cause of war, and the war is not started by one cause, but actually it's a deep long history of troubles One second. to start a war. Can I stop you right now? Don't feel offended. You read what is written. What have you written? है ना? Okay. हाँ, तो we'll take it up from there. है ना? जो पहले जो लिखा है ना आपने, वो read कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. Because this is a question answer, है ना? I mean, Yeah. वो तो आप तो नहीं, जब इन्विजिलेटर जो है, जो फिल्म मेकर जो है, जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, आप तो नहीं रहेंगे ना एक्सप्लेन करने में. आपको जो whatever is written, that is the final, ना? So therefore we'll concentrate on what is written, what is presented, and then we'll take it up from there. Huh? Okay. So the 5 aspects which need to be covered for making a war documentary film are, first of all, exploring the historical roots of the tension. If the researcher researches on a subject related to the country, so the history of the country should be traced by them. They should research about the history of the two nations and their relation, their geopolitical dynamics, and the sentiments of the people, which has resulted the tensions between the two nations, Russia and Ukraine. Then they need to know human personal perspectives. As per my observation about documentary making, the shape of the documentary is molded by the information given by the people related to the subject, like the struggles and experiences of the refugees, the soldiers, the civilians of both Russia and Ukraine, and how they are affected by the war, is not only informative for the researchers but also add a layer of empathy which can be developed in the mind of the audience who would watch the documentary. Now, the geopolitical situations. The war between Russia and Ukraine has not only affected the two nations, but has also had an impact on the global balance of the countries, the international relations, and the alliance of the nations. The opinions of the key players in the situation, like the European Union, United States, UN Security Council, can provide crucial information about the war situation to the documentary filmmaker. And the role of media in the war. The media which covers the war has also plays a crucial role in it, so the public can form perspective on the situations. The media propaganda and the business of misinformation should be addressed well as the use of social media, news portals, and state control media, how it presents the war. Covering the diplomatic resolutions for the war can make people aware about solving the problems in a constructive way. It includes doing negotiation, doing peace talks, seeking support and cooperation of the other countries. The analysis of the diplomatic efforts can make a way to peaceful progression and providing a sophisticated way of solving the problem between the nation. Overall, I can conclude that for making a documentary, we have to understand the various perspectives related to the history, geopolitical situation, and relations, as well as the human emotions, so that the root of the war, tensions between the nation, and the struggles of the people involved can be documented well in the documentary. तन्वी, आप एक बात बताइए, ये जो आंसर जो है, could it be incorporated into, if the question were describe something about the Israel and Palestine conflict? Yeah, ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्या? ट्रांसपोज हो सकता है क्या? मतलब उस पे लागू हो सकता है क्या ये सब? ये जो आपने जो लिखा है ना, पॉइंट अच्छी है. All the 5 points are very necessary. But बिल्कुल, I feel that it is relevant to all the wars, like whether चाहे इजराइल फिलिस्तीन का हो या फिर चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जो पॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, किसी भी देश के बीच में ये कर सकते हैं, किसी भी देश पे ये सब अप्लाई होते हैं. Yeah, but the question is Russia Ukraine war. उसका स्पेसिफिक्स क्या है ना? Okay. That I think is missing, है ना? For example, it is very valid that you go into the historical tensions of the country. Absolutely valid. Historical. चाहे रशिया यूक्रेन हो या पैलेस्टाइन इजराइल हो. पैलेस्टाइन इजराइल को बाइबल का हिस्टोरिसिटी है ना? Therefore वो पैलेस्टीन और इजराइल का जूस का ये है मामला है. पर बाइबल से कनेक्टेड नहीं है ना रशिया और यूक्रेन का.
रशिया Okay. यूक्रेन का संबंध है यूनाइटेड सोवियत यूनियन का, है ना? Yeah, Soviet Union was the union of some 16 states which was broken in 1991. उसके ताल्लुक है कोल्ड वॉर से, उसके ताल्लुक है Yeah. नाटो से, है ना? ये सब फाइनर जी. पॉइंट्स थोड़ा बहुत है ना, यू कैन ऑफ कोर्स राइट एन एसे, यू हैव अ 500 लिमिट वर्ड, दैट फाइनर एस्पेक्ट, द डिटेलिंग ऑफ दैट इज मिसिंग. इफ आई वर टू करेक्ट दिस Okay. पेपर, I were to correct this paper, I would say the points is correct, points are correct, Hmm. but Hmm. what is the specificity of that, है ना? Historical tension है, सबको जानते हैं. If somebody were to make a film on me or you, I would go for a historically क्या है, आप कहाँ से आए, वो तो जेनेरिक हो गया ना, Hmm. है ना? स्पेसिफिक क्वेश्चन है यूक्रेन रशियन वॉर, उसका स्पेसिफिक Okay. हिस्ट्री क्या है, एक दो लाइन, है ना? Hmm. जेनेरिक एक दो लाइन यहाँ से निकाल के एक दो लाइन स्पेसिफिसिटी आप डाल देते हैं, ये अच्छा हो जाता है. ठीक है सर, तो आगे से इस पे. तो सेम थिंग इन ह्यूमन पर्सनल पर्सपेक्टिव, है ना? या. आप किसको क्या पर्सपेक्टिव कर देंगे, हम्म. हाँ? इज मोल्डेड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पीपल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आपने जो लिखा है जेनरिकली एब्सोल्यूट करेक्ट. हम्म. As per my observation about documentary filmmaking, the shape of a documentary is molded by the information given by the public related to the subject. हम्म. ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट देयर इज अ caveat. caveat ये है, बट किंतु परंतु ये है कि अगर कोई यूक्रेन गया, आपने, है ना, हम्म. आपने आपने किसी फैमिली को इंटरव्यू किया, हाँ, ओके. उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, डिस्को डांस, तो तो आप मीन्स. डालेंगे, आप डालेंगे उसको, इस फिल्म को? नहीं. नहीं ना, है जो ना? भी डॉक्यूमेंट्री के रेलेवेंट लगे, रेलेवेंट करेक्ट, इंफॉर्मेशन, एंड करेक्ट, ऑल्सो दैट एडिंग अ लेयर ऑफ पेन एंड एम्पथी ताकि ऑडियंस इमोशनल हो जाए. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट मीन्स यू हैव मेड अ चॉइस. हाँ, हम्म. सो द डॉक्यूमेंट्री इज एब्सोल्युटली शेप्ड बाय द पीपल, हम्म. बट वो मटेरियल आप आके एडिट करेंगे, डिसाइड करेंगे, शेप करेंगे, है ना? तो हम्म. व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव्स, स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव्स आर यू गोइंग टू लुक इनटू? ये मिसिंग था इसमें, स्पेसिफिसिटी अगेन, समझे? ओके. हाँ, सो you would what sort of specificity you would be looking at? पर्सनल पर्सपेक्टिव्स, किस तरह की आपने बोला स्ट्रगल्स ऑफ रेफ्यूजीज, बोला ठीक है, जेनरिक है वो, है ना? किस तरह की स्ट्रगल्स है, सोल्जर्स का किस स्ट्रगल है ना? हम्म. वो थोड़ा सा एक आध मतलब हिंट देना, इफ यू हिंट इट दैट एट दिस लेवल, देन दैट विल बी फाइन. इवन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आपने जेनेरिक यूज किया, व्हाट इज अ जियो, क्या यूक्रेन रशिया के लिए क्या मायना रखते हैं, है ना? ओके सर, मैं बताती हूँ दैट इन माई +2 मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी थी और इसमें कोल्ड वॉर के बारे में काफी पढ़ा था. देखिए, बात ये थी दैट आप दैट जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में दो बहुत बड़े वो थे. एक थे जो अमेरिका की साइड के थे वो सारे मतलब एलीज, एंड दूसरी साइड थे एक्सेस पावर. एक्सेस पावर में रशिया, जर्मनी, जापान वगैरह थे, और जो वो एलीट पावर थे उसमें यूएस, इटली वगैरह थे. सो क्या होता है, एक्सेस पावर, एलीट पावर, जब वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह खत्म हुआ तो दोनों पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया. कोल्ड वॉर में ये होता था मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के प्लॉयज होते थे. और जो रशिया था, पहले रशिया नहीं, सोवियत यूनियन था, जिसमें अराउंड देयर वर 21 कंट्रीज, आई एम नॉट श्योर बिकॉज इट्स बीन टाइम. सो उसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, इसमें रशिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज वर देयर. I will study again on it. Yeah. So नहीं, कोई नहीं, नहीं, इसके बाद और in 1991 they were split into countries, नहीं, split into ठीक है, countries. ठीक है, ये तन्वी, सब ठीक है, ज्योग्राफी थी उनकी. ठीक है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल आप जानते थे, बट एज अ पेपर करेक्टर ये सब नहीं है, एक लाइन में भी नहीं है, दो लाइन में भी नहीं है स्पेसिफिसिटी, समझे? आप जानते हैं स्पेसिफिसिटी. दैट्स व्हाई आई सेड, आप नहीं, व्हेन आई करेक्ट द पेपर देयर, व्हेन समबडी करेक्ट्स द पेपर देयर, ऑल दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट आपको, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स. सो जो भी है 500 वर्ड्स के अंदर ही आना है, इसलिए आई इंसिस्टेड आप पढ़ो, है ना? जो लिखा है वो पढ़ो ना, उसी का अंदर आपने ये सब पूरा हिस्ट्री बताया आपने 100 ईयर्स का, है ना? हम्म. 100 ईयर्स का दो लाइन में कैसे डाले आप, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना. ये प्रैक्टिस, Yes. ये प्रैक्टिस ये है, अदरवाइज ये जेनरिक हो जाता है ना? हाँ. बट वैलिड पॉइंट्स है, हिस्ट्री अब जियोपॉलिटिकल करना है, मीडिया रोल, हाँ, मीडिया रोल क्या, मीडिया का रोल क्या रोल है?
मीडिया का रोल ये है कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है, लाइक वॉर की जनरली इंफॉर्मेशन में ये प्रोपागेंडा भी चला सकते हैं किसी भी किस्म का, तो फिर ये भी है कि मतलब ये फेक प्रोपागेंडा ना चलाए, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए, सेंसेशनलाइज ना करने लग जाए चीजों को, तो फिर ये है। ये भी फिर से आप जेनरिक हो गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन एंड द रशियन वॉर, वो क्या फेक हुआ, है ना, वो फेक न्यूज हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हो गया, ये मामला है। हम्म। सो सेम इन द अदर केसेस, ये समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस बिकॉज सर, मतलब यू आर नॉट देयर टू एक्सप्लेन योर आंसर हम्म। फॉर द इन्विजिलेटर देयर, तो हम्म। आई मीन यू कुड मिस आउट थिंग, सो बेटर प्रैक्टिस गेटिंग इनटू स्पेसिफिसिटीज विद इन दोस 500 वर्ड्स, है ना, थोड़ा सा जेनरिक हो, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? हाँ सर, मुझे लगता है मैंने मतलब इन जनरली ज्यादा लिख दिया कि सारी वॉर डॉक्यूमेंट्री एक ही तरह से बनती है, तो ठीक हाँ, है, उस पर आगे ध्यान देते हैं। हाँ, ठीक है ना, ये तो वर्ल्ड वॉर 2 का भी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 1 का भी हो सकता है ना। स्पेसिफिकली ओके, क्वेश्चन था यूक्रेन और रशियन वॉर, उसमें क्या हुआ आप बता, ठीक है? सो आई विल रिसर्च मोर। हाँ ठीक है, बट बट देर इज नो सेकेंड चांस इन द क्वेश्चन पेपर आंसर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, जो अगले सेकेंड चांस तो नेक्स्ट ईयर ही होएगा ना फिर। ठीक है, चले नेक्स्ट। या या क्वेश्चन 2। Yeah. So ये कहता है that if you wish to make a documentary, so you should automatically go to fiction, and if you want to nourish to your fiction, you have to come to reality. Write your arguments against the court or for the court. So वैसे मुझे fiction वाले में reality डालने का से I agree to some extent, but in adding fiction to the documentary, I am against. Yeah. पढ़ लीजिएगा। Okay. So yeah, that fictional story, there has been a line between fictional films and documentaries, and it is hard to blur the line between the two. It's a matter of debate to blend fiction and the documentary, or showing the reality in the fictional film. Here are the points to show that what's necessary. Okay. I'm writing against the quote. Emotional engagement. I think that Just can you hold on? Here are the points to show that for making a documentary, it is necessary to be true to reality, है true ना? to the reality. हाँ, तो okay, let me come later. हाँ, पढ़ लीजिएगा। The fictional stories interpret the real life as per the perspective of the writer, while the documentaries are rooted to the reality and focus more on the facts than tackling the emotions of the people. While the fictional stories create situations to evoke certain emotions. Documentaries can evoke the emotion well, as they show the real problems and situation by the people related to the subject and can evoke emotion in the people watching the documentary. Like the situation of victims in a war or a natural disaster, documentary can make people feel empathy for the people affected by the war or the disaster. तो Yeah. Storytelling freedom and flexibility. The fictional stories can give the filmmakers a creative liberty and complete freedom to tell their narrative, while in the documentaries, it's necessary to staying true to the facts without molding the reality as per the writer's perspective. That's why the historical movies like Bajirao Mastani are criticized for taking too much liberty as it takes them away from the historical facts. So, though documentaries don't have the freedom for presenting a story as per the director's perspective, because of which people find documentaries boring sometimes, but the documentaries can be made engaging by the help of the interesting narrative structure, impactful cinematography, and editing techniques. Even the documentaries more rooted to the reality create a lasting impact. Just hold on. Yeah, the जी. fictional stories can give the filmmakers creative liberty and complete freedom to tell their narratives. जी. Whereas, while in the documentaries, it is necessary to stay true to the facts without molding the reality as per the writer's perspective. ये क्वेश्चन, ये लेट्स जस्ट होल्ड ऑन टू दिस। जी बताइए। वुड यू आप कहना चाहते हैं कि राइटर्स पर्सपेक्टिव से फिक्शन में मायने रखते हैं? ओके सर, जैसे कि मैं आपको बता दी, जैसे मैंने इसमें हिस्टोरिकल फिल्म्स का एग्जांपल दिया, तो मैं बताती हूँ, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री को अपनी विचारधारा के हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कोई भी अगर फिल्म मेकर हो, हिस्ट्री पे बना रहा हो फिल्में, अब उसको किस साइड की स्टोरी दिखानी है, उसको इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करना है या फिर इन्वेडर्स की क्रूर हरकतों को दिखाना है, ऐसी चीजें जो है मतलब राइटर के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से अगर राइटर के पर्सपेक्टिव अगर अपोजिट में हुआ ट्रू हिस्ट्री के, तो फिर एक तरह से वो
हिस्ट्री से ऑडियंस को दूर ले जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं होता। और अगर डॉक्यूमेंट्री बने तो फिर ट्रू फैक्ट्स होंगे, और एक तरह से ये है कि रियलिटी से ही रूट रखे, जिससे ऑडियंस को पूरी सच्ची हिस्ट्री पता चले। तो ये था मेरा पॉइंट इसमें। समझ गया। मेरा मतलब ये है, जो मेरा मेरा पॉइंट ये है कि माफ करना मुझे, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी कोई बात कोशिश नहीं सर। कोशिश करता हूँ। का और की का कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम्म। व्हाट आई एम सेइंग, ये जो मोल्डिंग ऑफ रियलिटी जो फिक्शन में होता है, ये जो सही पकड़ा आपने, ये डॉक्यूमेंट्री में नहीं होता है क्या? हम्म। मोल्डिंग ऑफ रियलिटी एज पर द राइटर्स पर्सपेक्टिव जो फिक्शन में होता है ना? फिक्शन में क्या होता है आपके हिसाब से? मोल्डिंग ऑफ रियलिटी एज पर द राइटर्स पर्सपेक्टिव, हाँ, जैसे हम्म। आपने एग्जांपल दिया है सर, वो डॉक्यूमेंट्री में नहीं होता है क्या? उस पे आई मे बी डाउटफुल सर, बिकॉज क्या हुआ, मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज अभी तक देखे हैं, मतलब मीडिया स्टूडेंट है तो कॉलेज में अक्सर दिखाते हैं, तो फिर उसमें मैंने ऐसे देखा नहीं कि मतलब राइटर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो मोल्ड होते हैं या फिर कोई फिक्शनल एलिमेंट्स उसमें डालते हैं। ऐसा मैंने नहीं देखा। मतलब मैं बेसिकली, हमने जितनी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई हैं वो मतलब एक तरह से होती हैं कि मतलब सिचुएशंस दिखाते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो फिर ऐसा। ठीक है, सो दैट इज द पावर ऑफ डॉक्यूमेंट्री एंड दैट इज आल्सो इट्स डिसएडवांटेज। एक एक फिल्म है द ट्रायम्फ ऑफ विल करके, ट्रायम्फ ऑफ विल, तो सर फिल्म ट्रायम्फ। आपने सुना होगा नाम, नो। लेनी रेनफिनस्टाल करके, शी वाज वन ऑफ द मास्टर क्राफ्ट फिल्म मेकर ड्यूरिंग द नाजी रिजीम। उसने एक हम्म। फिल्म बनाई थी ट्रायम्फ ऑफ विल करके। ओके। उसमें उसमें स्टोरी ऑफ हिटलर है, हिटलर को कैसे पोर्ट्रे किया, एज ए सेवियर, एज ऑलमोस्ट एज ए गॉड, एज ए सबको मतलब एज ए नॉट एज ए हार्मफुल गाय बट एज ए सेवियर ऑफ जर्मनी, ऐसा दिखाया। बट हम्म। हम जानते हैं, पूरा दुनिया जानते हैं हिटलर ने क्या किया, एंड ओके सर। दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री, है ना? हम्म। सो वी शुड रियलाइज दैट द डॉक्यूमेंट्री कैन ऑल्सो हैव अ पर्सपेक्टिव। जैसे आपने वो यूक्रेन का, मैंने पूछा आपसे, डांस करते हुए यूक्रेनियन कोई डांस करते हैं, है ना? वो कैप्चर करेंगे क्या आपने हम्म। अपने फिल्म के अंदर डालेंगे या नहीं डाले ना? मतलब रियलिटी को, देर इज नथिंग कॉल्ड रियलिटी, हम्म। रियलिटी को आप कंट्रोल कर रहे हैं ना? हम्म। समझ रहे हैं? सर तो सर, यस सर। या सर जैसे कि बताइए। पता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे सर, देर इज बीन अ मूवी नेम्ड अशोका, हिंदी फिल्म अशोका ऑफ शाहरुख खान। सो उसमें जो दिखाया जाता है, मतलब अब आई बीन डाउटिंग दैट वेदर शुड आई सी इट और नॉट, बिकॉज वेदर इट हैज शोन द ट्रू हिस्ट्री ऑफ अशोका द ग्रेट और नॉट, मतलब इतना श्योर नहीं था मतलब ऐसे। सो मतलब व्हाट कैन यू से अबाउट हिस्टोरिकल फिल्म्स की, जो हिस्टोरिकल फिल्म जो होता है, अब हिस्ट्री जो होती है, कहते हैं कि कहीं पे जो बहुत ज्यादा एंशियंट हिस्ट्री होती है उसके बारे में इनएक्यूरेसीज होना ऑब्वियस सा होता है, क्योंकि सर क्या पता कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इतिहास में ढंग से नहीं लिखी गई हैं, या फिर कुछ लोगों के बारे में श्योरिटी नहीं है, तो अलग अलग सोर्सेस पे अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। तो फिर उस पे आपका क्या कहना है कि ये हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी के ऊपर क्या कहना है जो फिल्म्स में दिखाई जाती है, हिस्टोरिकल कौन, फिल्म्स लाइक अशोका एंड ऑल? ये ठीक है, ठीक है, व्हाट डिसाइड्स द एक्यूरेसी और द इनएक्यूरेसी ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग? हम्म। व्हाट डिसाइड्स, क्या डिसाइड, कौन सी क्या चीज है जो डिसाइड करते हैं कि दिस इज एक्यूरेट, दिस इज रियल? ये बहुत मायने रखते हैं ना, दिस इज रियल, दिस इज। एक जज जो है ओके। मर्डर केस में किस बेसिस पे बोलता है कि ये मर्डर किया हुआ है या ये मर्डर नहीं किया हुआ है? किस बेसिस पे बोलता है? आई विटनेस अप्रोच, और जो भी फोरेंसिक पे वो होता है कि फोरेंसिक की जो रिपोर्ट्स आई होती हैं उसमें क्या क्या साबित होता है, या फिर और कुछ कुछ, या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्रिमिनल के बिहेवियर से भी दिखा सकते हैं कि ये गुनहगार हो सकता है या नहीं। मोटी मोटी तौर पे एविडेंसेस, हम्म। एविडेंसेस, हाँ, हम्म। आपका एविडेंस का क्रेडिबिलिटी, हम्म। है ना? तो एक 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 साइकोलॉजिकल गाय है, हम्म। उस मर्डर मिस्ट्री का, साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री का केस में एक डॉक्टर आता है, बोलता है कि ये डॉक्टर he is not a murderer because of this reason, or he should not be punished because of this psychological reason. दूसरा हम्म। दूसरा आके बोलता है कि he is psychologically disturbed person and then therefore he should be punished. दोनों डॉक्टर्स है, दोनों एविडेंसेस है, तो हम्म। हाउ डू यू बिलीव दैट? whose credibility is there, है ना? ओके। आप एविडेंस का क्रेडिबिलिटी का हम्म। देखते हो, एंड दैट हम्म। दैट दैट डिसाइड्स कि आप अशोका क्रेडिबल है, अशोका फिक्शन फिल्म क्रेडिबल है कि नहीं, दैट डिसाइड्स दैट। अच्छा। कौन ओके देखा सर। है 1000 साल पहले, 2000 साल पहले कौन देखा है ना?
हाँ, I mean, there वैसे are सर क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ दैट इन माय सीनियर विंग 8th क्लास में जब मैं थी, तो फिर मैं एक सीरियल शो देखती थी रक्त नाम से, विच इज अबाउट द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज। इसमें होती थी आधे आधे घंटे की, विच टेल्स अबाउट सम ब्रूटल कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो उसमें एक मैंने सुनी थी हिस्ट्री में दैट पेशवा बाजीराव सेकंड के फर्स्ट के जो बेटे थे रघुनाथ राव, उन्होंने अपने नेफ्यू का मर्डर करवा दिया था। और कई सारे जो लोग पुणे में रहते हैं उन लोगों ने बताया था कि वो महल जो है जिसमें उनका मर्डर हुआ था, उसमें अभी भी उस विक्टिम की आवाजें गूंजती हैं। तो एक तरह से ये वहां की आई विटनेस अप्रोच हो गई है। तो फिर ये एक तरह से सच्चाई मानी जा सकती है कि ऐसा ऐसा उस टाइम पे हुआ था, टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट। so my दूसरा it is very easy to counter this in the sense that bring a guy and then say आवाज गूंजती है बोला ना आपने, हाँ, then हम्म। scientifically it can be proved, somebody might prove it otherwise, ऐसा कोई आवाज हो ही नहीं सकता, then what is the reality? तो कहने का मतलब ये है, the credibility of the evidence is what makes the film real. What ओके। makes your testimony real, है ना? या। Earth was flat, हम्म। credibly flat so many years back. देन हम्म। साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि अर्थ राउंड है करके, है ना? ओके। जितना रियल था कि अर्थ वाज फ्लैट, जो भी whoever said otherwise were jailed and killed, उतना हम्म। रियल था, है ना? उस या। जमाने में we were there, we would also believe that, but now we know that the earth is round because there is ओके evidence to that. So जी। it's up to you, it is up to the evidences, है ना? ठीक है, या so सो we'll go ahead. बहुत ही पुरानी हिस्ट्री जो होती है, लाइक अभी आपने कहा कि हजारों साल पहले सम्राट अशोक के दौर में क्या होता होगा, ये कैसे किसी को पता होगा। तो फिर मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे ऐसी रिसर्च हुई होती है, जैसे ऐसी प्रूविंग्स हुई होती है, उसी के हिसाब से कहा जा सकता है। ट्रू, वेरी ट्रू, एंड बेहतर ये होगा कि आपका सोर्सेस जो है आप कोट करें, है ना? बिगिनिंग ऑफ द फिल्म या एंड ऑफ द फिल्म में जो भी है, ठीक है? ओके, सो आई वुड विल सी गो दैट अहेड, एंड देन कंपेयर इट टू हिस्ट्री। या। या आगे ओके। आगे चले। या। एजुकेशनल वैल्यू। एजुकेशनल वैल्यू एंड सोशल इम्पैक्ट। ऐसा होता है दैट एजुकेशनल इम्पैक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय फिक्शनल स्टोरीज, can be impactful to people as they connect more to the problems of society if they are present in an entertaining manner. And documentaries can address the reality in a better manner, presenting the real facts with the footages, interviews of the people related to the subject. So it can be said that documentaries have more educational value and focus because of focus on reality rather than the storytelling. बट आई थिंक सो सो इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया था पर बाद में कट कर दिया था। जैसे कि सर देर आर फिल्म्स लाइक पैडमैन एंड टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिन जिन जो कि सोशली चेंज भी लाए, सोशल इम्पैक्ट उनका इतना ज्यादा था कि समाज में काफी ज्यादा चेंज भी आया उन फिल्मों के बाद। तो फिर ये भी कहते हैं कि फिक्शनल फिल्में भी सोशली इम्पैक्ट काफी ज्यादा करती है क्योंकि वो एंटरटेनिंग वे में प्रॉब्लम को प्रेजेंट करती है और इसी वजह से उनका इम्पैक्ट इतना गहरा रहा है सोसाइटी पे। या ट्रू, वेरी ट्रू। इस इसमें भी दिस क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आल्सो लिटिल बिट जेनरिक इन द सेंस, हम्म। बट फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट रियलिटी इज, है ना? ओके। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कंपैरिजन की क्वेश्चन आता है कि आप पहले डिफाइन करो ना व्हाट इज रियलिटी। हम्म। अब अगर रियलिटी डिफाइन करें तो फिक्शन में भी रियल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी रियल हो सकता है। अगर आप डिफाइन करें तो फिक्शन भी नॉन रियल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी नॉन रियल हो सकता है। सो देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू मिक्स एंड मैच, ठीक है? हम्म। या अदरवाइज इट बिकम्स अ जेनरिक काइंड ऑफ, है ना, ऐसे काइंड ऑफ। ओके। सो विल गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 3। या। Name a filmmaker, writer, artist, musician whose work has moved you deeply. What is that you have learned from them and influenced my creative thinking? Yeah. So actually, I can say that I wrote this answer very emotionally, like every other people, because अपनी inspiration के लिए लिखा है. Okay. बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनती है फिल्म। Yeah. So it introduces my journey with cinema and my love for cinema since childhood. I have been an enthusiast of cinema merely from the age of 3. And when I used and as a kid I used to think that the film are made by the actors film are made by the actors, but the filmmaker whom I am writing about is the person because of whom I came across the term of director. And the person is Indian filmmaker Priyadarshan, who has been my inspiration for being a filmmaker. The feel good vibes I felt from his films since childhood has fascinated me towards the beauty of cinema.
and seeing the credential filmed by Priyadarshan on the screen has been a moment of happiness for his fans all over the nation and a moment of being inspired for me. I've enjoyed his Hindi films a lot in the 2000s decade, and after enjoying his Hindi films in the 2000 decade, I started exploring his Malayalam and Tamil films. While I was studying in mass communication, I watched his Tamil and Malayalam films also, and I started liking him more after I explored his work in multiple languages. The things that inspire me a lot from him is the skill of blending the elements of different genres, like blending comedy with the thriller genre in films like Bhagam Bhag and Bhool Bhulaiya, or starting his movies with a romantic comedic angle but shocking the audience with a tragic twist in the end, because of which his films like Thalavattam and Minnaram are so iconic. The portrayal of romantic relationship between the lead couple is also very unique, and it starts with the couple hating on each other, and the chemistry between the actors is developed by constant bickering and fighting between the couple before they fall in love in films like Hangama and Thanmavan Kumbat. Another reason of liking Priyadarshan movies is the music, which is adorned with the soothing and melodious tunes complemented by the beautiful picturization with the use of vibrant colors and showing the beauty of the nature effectively. In popular songs like Allah Hafiz from Bhool Bhulaiya or Atri Ambile Kombile from Kala Pani. And just like he uses the slow riding of cycle as a symbolism of relaxed state of mind of the characters, the same relaxed people are watching after these songs. The way his films use symbolism like a broken photo frame or torn letters to depict the broken state of the character relation shows the way of visual storytelling. And I learned the art of symbolism in storytelling by seeing his films. And the way his film comments on big issues in subtle way is also a lesson for filmmakers that it is not always necessary to give a social message by preaching on the screen, but subtle dialogues and funny scenes can also shed light on social issues. Like Khatta Meetha has funny scenes which sheds light on issues like bribery and eve teasing. Priyadarshan has started the trend of slapstick comedies in Indian cinema and has also created a fusion of slapstick comedies and situational comedies, slapstick and situational comedy fusion in films like Boing Boing and its Hindi version named Garam Masala. People mostly typecasted Priyadarshan as a commercial comedy filmmaker, but he proved his versatility by award-winning art house films like Kala Pani, Kanchivaram, Kanchipuram got him a national award, and Silla Samyan Galil, which has reached the final round of the 74th Golden Globe Awards. Overall, I can say that Priyadarshan films did not only entertain me, but also has acted as a filmmaking encyclopedia for me by inspiring my creative thought process and teaching me a lot about filmmaking. That's why I like him so much. हाँ नहीं, ये लास्ट लाइन थोड़ा सा समझा दीजिए मेरे को. एक्टेड एज अ फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया, ये कैसे लागू होता है? क्या मतलब सर? ये लास्ट लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा. I can say that Priyadarshan's films did not only entertain me, वो तो क्लियर है, but also acted as a filmmaking encyclopedia. ओके सर, मैं बता दूं. सब बचपन में हाँ. जब हम उनकी फिल्में देखते थे तो ऐसा था कि मतलब से मस्ती मजाक की मतलब फिल्में होती है, मस्ती मजाक भी होता है, स्ट्रेस रिलीवर्स होती है उनकी फिल्में. लेकिन जब मैंने उनका और कंटेंट एक्सप्लोर करना शुरू किया, लाइक उनकी मलयालम फिल्में देखी, तमिल फिल्में देखी, तो मैं देखा दैट ही इज अ वेरी वर्सेटाइल फिल्म मेकर, एंड बाय द वे ही यूजेस the way his camera shots are there, the way cinematography is there, the way the music is there, sound design and all that, I have learned about various aspects of filmmaking from his films. उनका साउंड डिजाइन के बारे में क्यों नहीं लिखा आपने? साउंड डिजाइन का ये भूल गए, लेकिन आई कैन कमेंट अबाउट साउंड डिजाइन. वो मार्क्स भी भूल जाएंगे हम लोग देने के लिए ना. तो ये या जो बोला आपने, मैंने साउंड डिजाइन के बारे में एक्चुअली इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी वर्ड लिमिट काफी क्रॉस हो गई थी. आई वाज हाँ टू तो मच इन द इमोशंस तो कि वही तो वर्ड होता है लिमिट ना. ही क्रॉस हो गई. वही तो है ना, क्या निकाल सकते हैं, क्या रिपीटिशन है. आपने पॉइंट बाय पॉइंट अच्छा सा तीन या चार पॉइंट प्रदर्शित का फिल्म में क्या क्या है अच्छा सा किया है ना. आपने मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सप्लेन टाइम लिया है, वर्ड्स लिया. when I say time, I mean words right now, but otherwise when I see time, I see screen time, है ना. स्क्रीन टाइम ज्यादा अपने आप पे ज्यादा मतलब
to get into the matter, you took almost so many two paragraphs, है ना? आपने कैसा किया? नहीं, almost one whole paragraph, है ना? तो तो पहले तो ये था that how his work has that what role he has in my life, मतलब as an inspiration, वो तो निपटा दो ना। what he means to me, later on that what I like about him. तो ये सब 1, था। 2, 3 almost 3 लंबा लाइन्स है इसमें, उसमें 2 you could have reduced it, for example you could have reduced, तो compress करके, Okay. अपने आप में you are inspired by प्रियदर्शन, तो एंड में भी बोल रहे हैं आप, है ना? बिगिनिंग में भी बोल रहे हो, 1-2 लाइन में निपटा देना। तो मैटर पे आ जाइए। मैटर कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से, है ना? भूल गया अपना ब्लेंडिंग ऑफ एलिमेंट्स, ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट जॉनर्स, है ना? Yeah. ये मैटर मायने रखते हैं, ये इसीलिए आप बिल्कुल। लाइक करते हैं उसकी ना। एंड Yeah. देन सेकंड एज म्यूजिक है, उसका कलर्स है ना? हाँ। यू मिस्ड आउट ऑन How he presents the beauty of the nature. या स्लो मोशन शॉट्स है आपने, है ना? यू मिस्ड आउट ऑन द साउंड डिजाइन इन दिस, है ना? या यू बिकॉज ऐड, साउंड डिजाइन का मुझे कम समझ में आया। जैसे सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है, साउंड डिजाइन का इम्पैक्ट मुझे इतना समझ में नहीं आता, जबकि सिनेमाटोग्राफी का इम्पैक्ट अच्छे से समझ में आता है। एंड सिंबोलिज्म भी उनकी फिल्मों में मैंने काफी हद तक देखा कि वो किस तरह से सिंबल्स का यूज करते हैं कैरेक्टर की स्टेट ऑफ माइंड दिखाने के लिए। yeah, we can have a debate later on बिल्कुल whether बिल्कुल। cinema, whether symbolism in cinema works or not, but that's a different matter, है ना? या तो ये सब पॉइंट आपने किया है। या द होल थिंग इज लाइक यू कुड हैव गॉट थोड़ा सा जल्दी अंदर, यू कुड हैव एंटर्ड इनटू द मैटर थोड़ा सा जल्दी, सो दैट यू कुड हैव फाउंड एलिमेंट, मतलब काफी डिफरेंट चीज, यू कुड हैव फाउंड वर्ड्स फॉर दैट, है ना? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा यस सा सर। मैटर के अंदर थोड़ा सा जल्दी जा सकते थे आप, है ना? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने भूमिका बांधने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, मतलब इसकी। एग्जैक्टली, एक मेरा 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 वाक्य है ये, है ना? आपने किंग। भूमिका ज्यादा किया है, आपने बिल्डअप थोड़ा सा ज्यादा किया है ना? तो ये है। और स्क्रिप्ट राइटिंग, हॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटिंग का फिल्म में 10वां पेज, अगर 90 मिनट्स का, 90 पेजेस का एक फिल्म है, 10वें मिनट पे, 10वें पेज पे स्टार्टिंग आपका पॉइंट होना चाहिए, एक्शन स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। इफ देयर इज नथिंग एल्स वी कैन मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 4। या ओके। Two strangers, one being old and the other being young, meet at a roadside tea stall. Tea stall. अच्छा, okay, yeah. Two characters briefly and write dialogues between them. Okay, मतलब tea stall तो exactly नहीं दिखाया गया, लेकिन tea stall का एक रोल है, मतलब they sip tea together in the park. Okay. So there are two characters. First is Mr. Nair. He's a man in his 60s who is fit with slightly gray hair, and he's a very jolly person and a fitness freak but cultured person. He is wearing a white floral shirt and a mund. Mund means a dhoti, which is worn by Malayalis, and a chandanakuri. Chandanakuri is a chandan tika on forehead. It is also of Malayalis. Yeah. And second is Ananya, who is a modern girl wearing a track suit, and she is suffering from anxiety. She has anxiety issues and also a bit depressed and disturbed in life. And जस्ट it's a जस्ट 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 ये जो आपने डिटेल्स दिया ना, वेयरिंग ए फ्लोरल शर्ट एंड ए मुंडू एंड ए चंदन पुरी सेक्रेट मार्क, इसका मतलब उसका कैरेक्टर पता चलता है ना? सो दैट दिस पर्सन इज अ रिलीजियस पर्सन। yeah, he's a Malayali man shown. So attire से दिखाने की कोशिश की that he's a Malayali man. हाँ, And name is also Mr. Nair. तो So ये ओके सब, ओके, and सो he's a traditional man, मतलब एक fitness freak and एग्जैक्टली, very cultured person. Yeah. ट्रेडिशनल मैन, प्रॉब्ली रिलीजियस, बिकॉज वो टीका वीका लगाता है ना? है कि नहीं? ये पता चलता है। ये अच्छा आपने किया है ना? Okay. ये चंदनाकुरी जो है, Yeah. सेक्रेट मार्क जो है, वो अच्छा आपने ये किया। बट या प्लीज गो अहेड। Okay. अर्ली मॉर्निंग इन अ पार्क एट अ रोड साइड टी स्टॉल, मतलब पार्क है उसके बगल में एक टी स्टॉल है, और मतलब दिखाते हैं कि जो
चाय की खुशबू है उससे, मतलब सुबह महकती है, मतलब चाय की खुशबू से। नहीं, आप पढ़ो जो लिखा है। Aroma of the brewing tea wafts through the air as the sun begins to cast gentle glow around the surrounding. Mr. Nair is having a morning walk. On the other hand, Ananya is running and having anxiety and falls down while running. Mr. Nair sees her and says, "Hey girl, are you okay?" Ananya is in bit pain and says, "No, I am not okay." Mr. Nair says, "Sit on the bench, you will be fine." Ananya is irritated with life and says, "I can never be fine." Mr. Nair sit makes Ananya sit on the bench and brings tea. Mr. Nair says, "Have this tea, dear, you will be fine." Ananya says, "Thank you, uncle." Mr. Nair then says that, "What happened, dear? You seem a bit lost." And later on, Yeah. Ananya said, "I don't know. The life is messed up by work stress and long distance relationship problems." Mr. Nair says, "This generation seems very short tempered and impatient. You don't know what we faced in life." Ananya, "Every uncle says this as they don't know our problems." Mr. Nair says, "You know, you people have more facilities than us, but still seem to have less mental peace than us." Ananya, "I deal with a lot of workloads as I do a deadline job in which I am unable to manage my work because of this I am unable to focus on my long distance relationship as well as living life." Mr. Nayak, "You people have क्या रुको you people have more facilities and you are worried over such a small matter." Ananya, "Is this a trivial matter for you?" Mr. Nair then says, "Yes, dear, this matter is trivial and has solutions. Like you fix your work hours, set priorities to multiple works, and do the work as per your priority, and set some hours for your hobby and your relationship, and have an open communication to your partner for a healthy relationship." Ananya, "What can you say about my anger issues and anxiety?" Mr. Nair then applies a Chandanakuri on her forehead and says that, "I have applied Chandanakuri. This sandalwood mark has health benefits like relieving headache, and keeps us positive, as well as it has a cooling effect on the body, as well as doing meditation daily can relieve your anger and anxiety issues." Both Mr. Nair and Ananya go to their homes and promise to meet again for a walk, and Ananya is seen smiling because of feeling positive after meeting Mr. Nair. So end में दिखाते हैं that Mr. Nair also applies the tilak on her forehead so that वो काम रहे. तो मतलब एक तरह से मैंने इसमें तिलक के भी हेल्थ बेनिफिट बताया है कि मतलब किसी को एंजाइटी स्ट्रेस हो तो फिर जरूरी होता है, मतलब ऐसा. तो ये सब. ओके ग्रेट. आप एक बात बताइए, कोई भी नैरेटिव में, कोई भी इंसिडेंट में क्या होता है? एक बिगिनिंग होता है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है ना? बिगिनिंग में एक सिचुएशन ऐसा होता है कि एंड में वो ऐसा होता है ना, एक यहाँ से एक जर्नी है. वो आपका ये नरेशन में क्या है, ये किसका जर्नी है? ओके, जर्नी का मैं बताती हूँ. सबसे पहले इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एक मिस्टर नायर का और एक अनन्या का. मिस्टर नायर को दिखाया जाता है दैट ही इज वॉकिंग, शोइंग दैट ही इज अ काम सिंबल फॉर बीइंग काम रिलैक्स्ड पर्सन. एंड ऑन द अदर हैंड, अनन्या इज अ पर्सन हु इज रनिंग फास्टली and has anxiety on her face, which shows that she is a person who is impatient and anxious with the life. So we can show the contrast between the two people by it. That on one hand, Mr. Nair is very calm, and on the other hand, Ananya is a very anxious person. And later on, Ananya falls down, and if I have written the dialogues and even the way I have narrated them, narrate भी जिस तरह से किया, मतलब एक तरह से दिखाया गया है कि अनन्या जिस तरह से इरिटेटेड दिखाई जाती है इनिशियली वैसा मैंने इस नैरेटिव को प्रेजेंट किया है. इनके कैरेक्टर्स के स्केचेस बनाए हैं, इनके बोलने के तरीके से, और ये सब. लेटर ऑन दिखाया जाता है दैट व्हेन मिस्टर नायर एंड अनन्या स्टार्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ओवर द टी, सो उसमें अनन्या एक तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को नरेट करती है मिस्टर नायर को कि एक तरह से वो कितनी परेशान है अपनी जिंदगी में, और वो थोड़े वैसे टोन में बोलती है, इरिटेटेड टोन में लाइक हाउ मच शी इज anxious with the life and how
शी फील्स दैट उसकी लाइफ एकदम ही मेस्ड अप है। और दूसरी साइड मिस्टर नायर जो है वो एक तरह से काम टोन में उसको उसके सवालों का जवाब देते हैं, दैट आपको अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छा रखने के लिए ऐसा करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के लिए ये करना चाहिए, इस तरह से। एंड एट द एंड ही अप्लाइज अ स्मॉल तिलक ऑन अ forehead एंड सेज दैट व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इट। बिकॉज मैं ऐसा करती हूँ दैट वेन एवर आई राइट अ स्टोरी, तो मैं एक तरह से उसमें जो हिंदू संस्कृति के सिंबल्स होते हैं लाइक तिलक और वो उनके बेनिफिट्स बताने बहुत मतलब एक तरह से करती हूँ हमेशा। क्या करती हूँ, इसमें दिखाया गया है कि एट द एंड फिर इसमें दिखाया गया है जब मिस्टर नायर और अनन्या अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो अनन्या काफी पॉजिटिव फील करती है उस कन्वर्जेशन के बाद। तो अब ठीक है। इसमें आप बताइए। So basically it's a story of Ananya who is helped by this elderly person to maintain her calmness or whatever, है ना? तो basically ये है। Now या एक बात, इम्पैक्ट ऑफ मिस्टर नायर ऑन अनन्याज लाइफ। या अनन्या का लाइफ चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ मिस्टर नायर एंड हिज रिलीजियस माइंड, बेंट ऑफ माइंड, स्टफ लाइक दैट। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैलिडिटी वेदर तिलक एक्चुअली पीस करता है नहीं करता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट टेल मी वन थिंग, जैसे मतलब अर्लियर प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा प्रज्ञा का इसमें था, डायलॉग में था, why should why should this old man be giving advice to this stranger, same thing, stranger who is like, why should there is no build up to it, you know, there is no build up to it। कैसा क्या होता है, वो वो गिर जाती है, उसको खड़ा बैठ जाता है, he makes her sit down and then gives her tea and then चालू हो जाता है, as if एक साइकेट्रिस्ट है, वो एक काउंसलर है, he is more of a counselor, you know, than an old man with a tilak and a religious man। So what is missing here is the slowly, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों उसका वो क्यों सबको बोलता रहता है कि यार तू चंदन लगा दो अपने माथे पे, है ना, वो क्यों करते रहते हैं सब, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, ये थोड़ा सा हिंट है, मिसिंग है इन द बॉडी ऑफ द स्क्रिप्ट। ओके, मतलब एक तरह से मैंने इस कहानी में ढंग से भूमिका नहीं बनाई है, मतलब नैरेटिव को एग्जैक्टली सेट करने के लिए। एग्जैक्टली उसमें उसमें ज्यादा किया आपने पिछले आंसर में, इसमें थोड़ा सा कम किया। ये बहुत अगर भूमिका नहीं करते हैं फिक्शन में या डॉक्यूमेंट्री में, बरोबर एप्ट, नॉट ज्यादा नॉट कम, एप्ट, है ना, आपका आपका जो बिल्डअप करते हैं ना डायलॉग, वो इट विल फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। I'm not talking about the quality of the dialogue and the length of it. All that has scope to be reduced and stuff like that. अभी 3 लाइन का डायलॉग 1 लाइन में बोल सकते हैं, 1 लाइन का डायलॉग 2 वर्ड में बोल सकते हैं, है ना, द सेम इफेक्ट आ सकते हैं, वो सब अब प्रैक्टिस से आ जाता है। एंड बड़े बड़े राइटर्स को भी मुश्किल हो जाता है ये करने में, दैट कम्स आउट ऑफ प्रैक्टिस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर ये एडिफाइज जो है आपका फाउंडेशन जो है, आप बरोबर बिल्ड करते हैं एंड वो स्मूथ हो जाते हैं, एंड देन आप कुछ भी कर सकते हैं, बिलीवेबिलिटी आ जाता है ना। अदरवाइज आपको बोला गया है एक एक्सरसाइज करो, आपने एक्सरसाइज किया, ये आ जाता है, अदरवाइज दैट इज अ फीलिंग दैट वी गेट। आई एम क्लियर, आई एम यस क्लियर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यस सर। सर वैसे मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी दैट एक्चुअली जो वो होता है ना, मतलब जब आपने कहा कि व्हाई एन ओल्ड मैन शुड गिव एन एडवाइस टू अ यंगर पर्सन, तो मैं अब एक तरह से मैं 2 जनरेशन के कंपैरिजन का भी बताती हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी अबाउट जेन जी में मतलब ये कहा जाता है कि मतलब ये काफी जल्दी से क्या, जी सर, ये सर फ्यू डेज बैक मैं एक वीडियो देख रही थी जेनजी के बारे में अबाउट कि व्हाट, जेनजी जेंसी? जेन जी जेड जनरेशन जी, या उसमें दिखाता है कि जेनजी जो है ओके वो ओके, अपनी लाइफ को लेके कितना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज हैं उनकी लाइफ में, वाइल जो पिछली जनरेशन में था वो इतना नहीं है। सो इससे मुझे आइडिया है कि एक तरह से दिखा सकता है दैट अ पर्सन, वन पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग इन द लाइफ एंड द अदर पर्सन इज वेरी काम फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। तो एक तरह से जो ओल्डर लोग होते हैं, प्रीवियस जनरेशन के लोग होते हैं, वो एक तरह से अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए जो जनरेशन जी है वो एक तरह से उनको एक तरह से काम और बैलेंस रखने में मदद करते हैं, वो ऐसे हैं। एंड जो चंदन वाला मैंने एंड में पार्ट लगाया दैट ही अप्लाइज अ चंदन कुरी ऑन हर हेड, तो वो एक तरह से हम ये भी दिखा सकते हैं दैट चंदन इज एक्चुअली अ सिंबोलिज्म सिंबल ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम एन एल्डर पर्सन टू अ यंगर पर्सन। चंदन एक तरह से ब्लेसिंग का भी सिंबल है। अब मैंने इसका ठीक है, बट हाँ ठीक है, बट ऑल दैट विल फॉल फ्लैट इफ योर एडिफाइस इज नॉट करेक्ट, है ना। ये आप क्या बिल्डअप कर सकते हैं, आप
आप टेरेस टेरेस बिल्डअप कर सकते हैं, आप वॉल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप सेकंड फ्लोर भी बना सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी बना सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन ठीक नहीं है, आपका आपका फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, ऑल दैट वुड नॉट मीन एनीथिंग, है ना। देयर इज नो, वंस यू राइट अ स्क्रिप्ट, it does not need an explanation. It should be speaking for itself. For example, Ananya, एक line है आपका, on the other hand, Ananya is running and having anxiety and falls down. Now, what do you mean by having anxiety? How does it show visually? Does it show in dialogue? बाद में ऑफ कोर्स No. डायलॉग पे आता है, बट यहाँ पे एंजाइटी मतलब क्या? वो तो पसीना पसीना से परेशान हो सकती है ना। तो या हाउ डू वी पसीने से डिफरेंशिएट परेशान हो सकती दैट है। या between the anxiety that you're psychological? सो हाँ, इसके लिए तो क्या है ना, मुझे ये अब सब एक डिफरेंट एक टाइप्स है। डायलॉग के साथ वो कैसे एक्सप्रेशन में, वो कैसी टोन में बोल रहे हैं, ये भी लिखते हो। मतलब अब से ये भी लिखूंगी, मतलब उसमें कि किस टोन में बोले हैं, कैसे हाव भाव हैं उनके, नॉन वर्बल क्यूज क्या है, ये सब। बराबर, एग्जैक्टली, ये सब और लिखना चाहो बहुत तो मतलब जरूरी है। जो सिंबोलिज्म का मैंने बताया कि वो उनके सर पे तिलक लगा के, मतलब एक तरह से ब्लेसिंग का सिंबोलिज्म, तो ये भी लिख सकते हैं दैट इट इज ब्रैकेट में, दैट इट इज सिंबॉलिक टू दिस। वो कैसे लिख सकते हैं? हाउ डू आई नो दैट इट इज सिंबॉलिकल? आपने स्क्रिप्ट लिखा, ब्रैकेट में एक लिखते दिस इज सिंबॉलिकल, कैमरा कैमरा ब्रैकेट में लिख दिया, कैमरामैन को बोलता है सिंबॉलिक शूट करो, कैसा शूट करेगा वो? हम्म ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया ना, सिंबॉलिक करके। कैमरामैन लेगा, सिंबॉलिक कहाँ है, सिंबॉलिक कहाँ है, वो तो ढूंढेगा कैमरा पर्सन जो है ना। हम्म सो इन द डायलॉग ओके। सिंबॉलिकली मैं डाल रहा हूँ आपका, तो वो तो ऑब्वियस हो गया, वो तो हाँ। ऑब्वियस हो गया। और दो तीन, अदरवाइज यू फाइंड आउट सम अदर मीन्स हाउ दैट थिंग विल कम अप। यू कांट राइट हम्म सिंबॉलिकली, है ना। हम्म एंड ही यू कांट राइट फॉर एग्जांपल इन ब्रैकेट ही इज फीलिंग हैप्पी। हम्म कैसे हैप्पी? हंसेगा क्या? या सो एलोरेट मतलब एक करोगे तरह से क्या? बस व्हाट इज एंड में व्हाट ये इज डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं दैट एट द एंड आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन दे आर गोइंग टू द प्लेस स्माइलिंग विद अ स्माइल ऑन द फेस। मतलब ऐसे तो एक तरह से मतलब उनके हाव भाव दिखा सकते हैं एक, ऐसे करके। हाँ, हाउ हाउ अबाउट से या तो ऐसे डिस्क्राइब कर हिंट सकते हैं कर या फिर सकते हैं हाउ। डायलॉग के साथ लिख सकते हैं, या तो या तो एंड में डायलॉग के साथ लिख लिखें। सकते हैं, जैसे जैसे आपने बोला, एंड दिस बोथ ऑफ देम स्माइलिंगली गो अवे, ऐसा करके, हम्म मतलब ये हिंट दे सकते हैं, है ना। with तो Ananya had a calm face with a smile as she is feeling very positive after meeting Mr. Nair. ये फीलिंग वेरी पॉजिटिव मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। हम्म कैमरामैन मेरे को मतलब लिटरली समझ में आता है, इफ इट वाज अ शॉर्ट स्टोरी समझ में आता है, बट एज अ डायलॉग राइटिंग, एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग, है ना। हाउ डू, क्लासिक एग्जांपल में कैमरामैन को बोलता है कि शूट करो, तो वो हम्म पॉजिटिव है, वो क्या शूट करेगा, है ना। चेहरे के एक्सप्रेशंस विद अ क्लोज अप शॉट। ऑफ चेहरे का व्हाट एक्सप्रेशन? चेहरे के हैप्पी एक्सप्रेशंस विद अ क्लोज अप शॉट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यू शुड राइट दैट, है ना, इंस्टेड ऑफ ओके, अ सेइंग क्लोज अप अदरवाइज। शॉट ऑन अनन्या स्माइलिंग फेस, इवन इफ रिलैक्स क्लोजअप एंड इज नॉट, स्माइलिंग फेस। इवन इफ क्लोजअप शब्द नहीं है, वो बाद में आता है। अनन्या स्माइल्स एंड इज रिलैक्स एंड शी स्माइल्स एंड बोथ ऑफ देम स्माइल एंड वॉक अवे, ऐसा लिखेगा तो थोड़ा बहुत हिंट समझ में आता है ना। या तो ओके। डायलॉग में बोल दो, है ना, हम्म अनन्या बोलती है, हाँ मेरा हेड बहुत कूल हो गया अभी, है ना। और वो हल्का ऑब्वियस, सा, हल्का ऑब्वियस है। हल्का सा दैट आई गॉट, मतलब एक तरह से कहते हैं दैट आई एम फीलिंग बिट कूल ऑन माई फॉरहेड, या सो आई ऐसा, एम फीलिंग काम। ऐसा ऐसा कुछ बोल दो, ये तो क्लियर हो जाता है, बट दैट इज ऑब्वियसली क्लियर, यू वुडंट वांट टू डू बिकम दैट ऑब्वियस। तो आप एक तरीका ढूंढो विच इज नॉट हम्म वेरी ऑब्वियस। काफी सारे चीज ऐसा है इन द अर्लियर स्क्रिप्ट्स आल्सो, इंफॉर्मेशन देने के लिए डायलॉग हम्म है ना। फॉर एग्जांपल, ये जो है, इज इज ट्राइवल मैटर टू यू, ट्रिवियल मैटर टू यू, वो पूरा इतना नायर साहब है ना, इतना चार हम्म लाइन बोलता है, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, है ना, इन द या गाइड्स ऑफ डायलॉग, दैट इज theatrical, है ना। मतलब मुझे भी लगा कि मतलब इसको थोड़ा और बेहतर वे में लिखा जा सकता है कि नायर साहब उसको थोड़े और अच्छे तरीके से हाँ बताते चीजों को, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मैंने बड़े शॉर्ट नोटिस में लिखा तो इसको ये थोड़ा हाँ, समझ में तो नहीं आया। ध्यान ध्यान रखिएगा अगली बार, है ना। तो यू शुड नॉट यूज। एक्चुअली किसी भी इंफॉर्मेशन को मैं डायरेक्टली तो नहीं देना चाहिए, मतलब या तो मैं मेटाफोर के थ्रू यूज करूँ। जैसे कि मतलब मैं मानती हूँ कि अगर मैं कोई भी कहानी या फिर कोई भी विजुअल स्टोरी टेलिंग करने वाली तो उसमें मेटाफोर्स का बहुत यूज करना होता है मुझे। ये सब लिटरेरी वर्क्स में मुझे मेटाफोर्स और सिंबोलिज्म का यूज करना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे। या डायलॉग इतना लिखो
ताकि एकदम जरूरी है ना, एकदम जरूरी है उतना ही लिखो डायलॉग, है ना। एंड Okay. देन मिक्स इट विद द एक्शन एंड स्टफ लाइक दैट, Hmm. हाव भाव एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। Hmm. तभी तभी डायलॉग राइटिंग का ये होगा। ठीक है, Hmm. तो विल विल गो अहेड, आगे जाते हैं। हु इज द नेक्स्ट वन? Yes, sir. Trisha. Trisha is there? Yes, she's there. Yes, sir. Hi, Hi, Trisha. Hello, sir. Yeah, start कीजिए। सर डॉक्यूमेंट्री के बारे में मुझे उतना जी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सिर्फ आंसर पहले। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही ना? हाँ, अभी आ रही है। जी। तो रशिया मैंने एक जनरल आंसर दिया है, क्योंकि बहुत मैंने पढ़ा नहीं था पहले डॉक्यूमेंट्री के विषय में और ज़्यादा देखी भी नहीं है। तो ये आंसर वैसे सिर्फ आंसर करने के लिए लिख दिया था, उसके बाद मैंने फिर लिखने के बाद मैंने पढ़ा। अच्छा, रशिया मतलब यूक्रेन ठीक वॉर है। पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए सबसे जी चलिए बताइए, हाँ, अ, कंटिन्यू। रशिया यूक्रेन वॉर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दोनों में वॉर किस वजह से हो रहा है। उसके बाद दूसरा ये कि उस वॉर से आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो लोग क्या चाहते हैं। क्या वो वॉर को सपोर्ट करते हैं या फिर चाहते हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा ये कि इस वॉर में दोनों जगह पर कितना नुकसान हो रहा है, कितने बच्चों के स्कूल का नुकसान हो रहा है, कितने लोग जान गंवा रहे हैं। क्या इन सब नुकसानों की भरपाई हो पाएगी। क्या सरकार की तरफ से इन सभी नुकसानों की भरपाई के लिए कोई योजना बनाई जा रही है या फिर भविष्य में बनाई जाएगी। चौथा ये कि सभी लोग जिन पे इस वॉर का असर पड़ रहा है या जिनका इस वॉर की वजह से नुकसान हुआ है, उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है इस पूरे मामले में और वो लोग क्या चाहते हैं कि सब इसी तरह से चलता रहे या फिर अगर उन्हें कोई सुझाव देना हो इस पूरे संदर्भ में तो उसे ऐड किया जा सकता है। और लास्ट में इन सभी वॉर के क्लिपिंग्स और रियल लोकेशन के फुटेज ऐड किए जा सकते हैं, ताकि जो लोग देखें उन्हें वहां के हाल का सही तरीके से पता चल सके और लोग सोच पाए कि वहां क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है त्रिशा, अब मान लो ये लिख दिया है ना, जी। करेक्शन करेक्शन के लिए आप ही के पास आ गया। जी। हाँ, इसका 10 मार्क जी। है ना। आप अभी वट एवर कन्वर्जेशन वी हैव बीन हैविंग ओवर द लास्ट 1 आवर, उसके हिसाब से आप कितने मार्क्स देंगे इसको? सर बहुत कम। और क्यों देंगे उतना? सर इसमें क्योंकि कुछ भी डिफाइंड नहीं है, वो जिस आप टॉपिक नंबर पे लिख पूछ दीजिए। 4। थोड़ा सा क्रैक हो रहा है वॉइस आपका। अ, द अदर्स आर एबल टू लिसन? Yes, sir. Yes, sir. क्या? हेलो या सर, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है मेरे तरफ से ही। मैं या या अच्छा, अभी क्लियर है आप? जी। हाँ, आप बता दीजिए अभी। सर 3-4 मार्क्स मैक्सिमम। चाहिए 3 या 4? ज्यादा से वो ज्यादा उतना। बिलीव में हमको वो 3, हाँ, 3 या 4? 3। 3, हाँ। आपको 3 किस पॉइंट, किस बेसिस पे 3 दे रहे हैं आप? जो बेसिक होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री में वो बातें हैं, मतलब वो किसी पे भी अप्लाई होंगी, उसमें ऐसे यूक्रेन रशिया का ना भी हो तो उतनी बातें हैं सिर्फ, और जो प्रॉपर हाँ, सवाल है उसका जवाब नहीं है इसमें। है ना, अभी समझ में आया ना? जी। व्हाट इज मिसिंग करके, है ना। जी। जी। क्विकली क्लियर है, एक जेनेरिक टर्म्स में आपने लिखा है ना। जी। ये तो जी। होना ही जी। है, आप ऐसे जी। लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, है ना। वो जी। मतलब वो स्पीच देना हो तो स्पीच देंगे, ऐसे ही देंगे। या स्पीच में भी बोलेंगे यार कहाँ है स्पेसिफिक्स, कहाँ है ना। जी। स्पीच में भी बोलेंगे, ऐसे में भी बोलेंगे। Now, जी। अभी नाउ दैट you have had this conversation over the last 1 hour or 1 hour 15, 1.5 hours, अभी इसमें क्या 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 डालेंगे?
सर इसमें स्पेसिफिक जैसे कि आपने प्रागी को बताया था जो चीजें कि वो जेनेरिक ना होके और फिर उसमें जो स्पेसिफिक है रशिया यूक्रेन का बात आना चाहिए उसमें, जो उसका इतिहास है, उसकी जो प्रॉब्लम है जिस पे ये बेस्ड है, वो सारी चीजें आएंगी तो ये एक आंसर एक बेहतर हो सकता है। हाँ, एक हो गया और 4 पॉइंट है हम्म। आपका। हाँ, तो वही जो लोकेशन वगैरह वाली बात है, हाँ जो होता है कि जो अन्य लोग कह रहे थे बेसिकली वो सारी चीजें। हाँ, ये समझ गया। नाउ यू अंडरस्टूड ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट, है ना? So यस सर, if I were यस to सर, आई ask you अंडरस्टूड। again, or probably you could write it again for your own benefit, है ना? यस 500 सर, words यस आप सर, लिख लीजिएगा, डेफिनेटली। है ना? तो हाँ। मेरे ख्याल से समझ में मतलब इट्स बीन थ्रू, है ना? तो आगे जी। चले हम। जी। हाँ, तो सेकंड जी क्वेश्चन करते सर, ये भी मैंने सिर्फ उत्तर करने के लिए लिखा है, आता मुझको ये जवाब भी नहीं आता हैं। था। आपको सही सीट नहीं अ, मिलेगा। अ, अगले साल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब जी कोई बात सर। नहीं, कोई नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग। नहीं सर, आई अंडरस्टूड। हाँ, मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हमें रियलिटी की ज़रूरत है, जिसे नॉरिश करने के लिए हम फिक्शन की ओर जा सकते हैं। इसलिए मैं इस सेंटेंस से सहमत नहीं हूँ और मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री में कल्पना कम और ज़्यादा हकीकत होनी चाहिए। इसलिए हमें रियलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। जब हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सृजन की क्षमता अपने आप अच्छी हो जाती है और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बना सकते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री की प्राइम रिक्वायरमेंट है वो तो रियलिटी है, तो जितना भी हम रियलिटी के करीब रहेंगे हमारे लिए उतना बेहतर होगा। आप बताइए अभी द डिस्कशंस दैट यू हैविंग। एक तो कंपैरिजन नहीं किया आपने, है ना, फिक्शन और जी। फिक्शन में जी। जी। रियलिज्म कैसा हम्म। होना चाहिए, रियलिटी कैसा होना चाहिए। या हम्म। तो फॉर्म में हो जी सर। सकता है, फॉर्म में, हाँ। है ना? आप ज्यादा हम्म। कटिंग नहीं कर सकते हैं या उस तरह की, या लॉन्ग शॉट ही रख सकते हैं, है ना? उस तरह की जी। फॉर्म में रियलिज्म का प्रैक्टिस, या तो लॉन्ग टेक रख सकते हैं विदाउट कट्स, है ना? जी। या तो हम्म। वो कंटेंट का कर सकते हैं, या तो वो या तो फिक्शन में आप पूरा एक्टर्स को बोलेंगे आप रिहर्स करो, है ना? कोई डायलॉग नहीं है, जी। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम्म। आप जाके ये सिचुएशन, एक लाइन का सिचुएशन है ना, तो हम्म। जो भी है आप बोलेंगे हम रिकॉर्ड करेंगे ना। या तो वो हो सकता है, या तो वो डॉक्यूमेंट्री में हो सकता है कि यार आप यही बोलो, हाँ जी। आप यही बोलो, ये 4 लाइन दिया आपने, आप वो रिहर्स करो, अब हम्म। वो इंटरव्यू, एंड इट इज पोस्ट एज एन इंटरव्यू, है ना? हमने हमने देखा है जी। टेलीप्रॉम्प्टर लेके, है ना, लोग हम्म। लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ना, टेलीप्रॉम्प्टर्स लेके, हम्म। तो वो स्क्रिप्टेड होती है ना? वो हम्म। रियलिटी और फिक्शन, वो सब चीजें आपको करनी चाहिए, है ना? जी वो सर। सब जी। इस चीज पे करनी चाहिए। जी सर। सो द कहना क्या है, द प्रैक्टिस, अगर आपको फिक्शन अच्छा करना है, द हम्म। सेइंग इज दैट आपको प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्री करना चाहिए, है ना? ओके। डॉक्यूमेंट्री अगर आप डॉक्यूमेंट्री के कैसे लोग उल्लू बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री कोई रियलिटी नहीं है, सब उल्लू बनाते हैं, है ना? ओके कोई सर। जी। सब उल्लू बना बोलते हैं कि रियल है। जी। से ये आई विटनेस अकाउंट है, आई विटनेस बंडल होता है ना, कैमरा के लिए होता है हम्म। ज्यादातर, है ना, ज्यादातर। हम्म। तो हम्म। तो अगर फिक्शन में आपका शार्पन स्किल शार्प करना है, आपको हम्म। डॉक्यूमेंट्री एक आध बनानी है, तो पता चले कि स्ट्रक्चर कैसे करे, है ना, पता है। एंड अगर आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, अगर हम्म। फिक्शन आप करते हैं, वो स्ट्रक्चरिंग करते हैं, वो स्ट्रक्चरिंग जी। आपको काम आएगा डॉक्यूमेंट्री पे। At जी this सर। point, I would also like to tell one fundamental difference between documentary and which I didn't tell last before when the girl asked the question. हम्म। फिक्शन में एक लाइन था किसी का, बोलता है कि एकदम फ्रीडम है हम्म। ना, फिल्म मेकर को फ्रीडम है। हम्म। आई एम सेइंग द डॉक्यूमेंट्री में नहीं है ऐसा करके। एक हम्म। एक नॉट ओनली दिस पर्सन हु हैज रिटन इट, बट जनरली द वर्ल्ड ओवर देयर इज अ सेइंग दैट फिक्शन में there is a absolute freedom for you to do anything, and no, हम्म। documentary में there is absolute no freedom because you're bound by reality. I am saying the यस। opposite. हम्म। When you're constructing a documentary, you have the हम्म। absolute freedom. आप कोई कुछ भी स्ट्रक्चर कर सकते हो, तो कहीं से भी उठा के कहीं से भी कर सकते हैं। Whereas in the fiction film, आपका एक फॉर्मेट है, ड्रामेटिक हम्म। नरेटिव फॉर्म में अगर कोई ड्रामा का और लिटरेचर या ड्रामा आप किसी ने किया होगा, पता चलेगा कि एक स्ट्रक्चर है, एक क्लाइमैक्स है, इंट्रोडक्शन है,
जहाँ पे लोकेशन और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, एक पॉविटल मोमेंट है जो एक्शन स्टार्ट होती है, क्राइसिस होती है, एक क्लाइमैक्स होती है और एक रेजोल्यूशन होती है. यू कांट मूव अवे फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर. इफ यू मूव अवे फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, वो गड़बड़ हो जाएगा, ऑडियंस को गड़बड़ हो जाएगा, है ना. People moved away. That's a यस different point of time. But you are limited by this structure, whereas this यस. structure does not exist in the documentary. है ना. अब हम्म. जो भी पॉइंट बाय पॉइंट यूक्रेन का पॉइंट, यूक्रेन फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू टेक दैट यूक्रेन थिंग, हिस्ट्री पे गए आप, है ना, और जी फिर पर्सनल पे गए आप, है ना, और कुछ गया, और नाटो पे गया आप, है ना, और जी. प्रेस पे गया आप, है ना. हम्म. All these things are matter. So there is absolutely, according to me, there's absolute freedom for you in making of a documentary rather than in a fiction film. Yeah, ठीक है. यस This सर. is for everyone. Yeah, we'll go ahead. आगे चलते हैं. यस सर. Yeah. Name a filmmaker, writer, artist, musical whose work has moved you deeply. What is it that you have learned from them and has influenced and inspired your creative thinking? इम्तियाज अली की फिल्में मुझे बहुत इंस्पायर करती आई हैं. उनके कैरेक्टर्स अपने सपनों के लिए लड़ते हैं. अपने बाहर की दुनिया से लड़ना तो फिर भी आसान होता है, उनके फिल्मों के कैरेक्टर्स अपने अंदर की दुनिया से लड़ते हैं. वो बात मुझे बहुत मोटिवेट करती है. मैंने उनकी फिल्मों में सपने देखना सीखा है. अपने सपनों के लिए जीना, उनके लिए लड़ना, अपने आप को संभाल कर रखना और सबसे ज्यादा अपने नजरिए के लिए दुनिया में जगह बनाना उनकी फिल्मों में दिखाया जाता है. उनके फिल्मों में लड़कियों के भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लड़कियों को भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है. ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि औरतें इतने हजार सालों से अपने हक के क्रेडिट्स खोती आई हैं और उनके सारे एफर्ट्स को नकार दिया जाता है. पर उनकी फिल्मों में जैसे कि तमाशा में पूरी तरह से लड़की को उसके एफर्ट्स के लिए क्रेडिट्स दिए गए. और हाईवे में तो लड़की मेन कैरेक्टर थी. लड़की के नजरिए से किसी भी मेल डायरेक्टर द्वारा लिखी गई कितनी अच्छी और सच्ची कहानी है ये, जो समाज के सच को उजागर करती है. क्योंकि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए होती हैं. इसके अलावा उनकी सारी फिल्मों में एक स्पिरिचुअल एसेंस होता है, डिवाइन कनेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स विद द यूनिवर्स, जिससे ये बात कही जा सकती है कि इंसान जो चाहता है उससे वही मिलता है. और ये बात मन में कितनी उम्मीद जगाती है और जिंदगी जीने के लिए कितना मोटिवेट करती है कि हमें जो भी मिला है वो ही हमारे लिए सबसे सही था. इन सब बातों से जिंदगी कितनी आसान हो जाती है और अपने दुखों से कुछ राहत मिलती है. मेरी क्रिएटिव थिंकिंग में ये सारी बातें हेल्प करती हैं कि मैं इस तरह से अपने कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकूं और अपने भी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकूं. इसलिए इम्तियाज अली मेरे फेवरेट फिल्म मेकर हैं. मेरे हिसाब से आपने एकदम सही लिखा है, ज्यादा नहीं कम नहीं, है ना. जी इसमें क्या हो जाता है, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज आपका वर्ल्ड व्यू जो है उभर के आता है. जी यू नो व्हाट इज अ वर्ल्ड जी. व्यू आपका. यस सर. यस सर. हाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड व्यू एकदम उभर के आता है. एंड दैट वर्ल्ड व्यू यू हैव सीन इट इन इम्तियाज अली फिल्म, यस है सर. ना. ऐसे उभर के. एंड आई थिंक देयर इज नथिंग मोर फॉर मी टू कमेंट, है ना. अगर आप बताइए अभी 10 में से कौन से कितना मार्क देंगे इसको. सर 7-8 तो पता देंगे नहीं. ना, है ना. हाँ यस सर. ना. हाँ, तो एक तो क्या है, इम्तियाज अली क्या है उसमें समझ में आता है, आपका वर्ल्ड व्यू जी क्या है वो समझ में जी आता है. द क्वेश्चन इज दैट इम्तियाज जी अली कैसे आपको, है जी. ना. आई थिंक इट इज वेरी एप्टली डन. या विल गो अहेड. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जी. बनारस के अस्सी घाट के पास एक चाय की टपरी पर एक मुंबई से आया हुआ लड़का चाय पी रहा है. घाट में सनराइज का टाइम है और वो अपने कैमरा में घाट की तस्वीरें देख रहा है. तभी वहां एक बुजुर्ग बनारसी आते हैं. उससे पूछते हैं, कहाँ के रहने वाला हो बाबू? लड़का, बम्बई सर. स्क्रोल. बुजुर्ग, अरे बम्बई तो हम भी जाना चाहते थे पर कभी जा नहीं पाए. लड़का, इतना सुंदर है आपका बनारस, आप क्यों जाना चाहते थे यहाँ से? मैं हर साल आता हूँ यहाँ एक बार ताकि अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से आराम पा सकूं. बुजुर्ग, हाँ वो सब तो ठीक है पर हम जाना चाहते थे गीतकार बनने के लिए. हम बेच्चू से एमए है ना हिंदी में, हमको बहुत शौक था, पहले कविता लिखते थे जब कॉलेज में थे पर कभी जा नहीं पाए मुंबई हम. लड़का, पर आप जहाँ हैं वो जगह बहुत अच्छी है, आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है. जबकि मेरा मन करता है कि सब छोड़ के यहाँ आ जाऊं.
अरे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें लड़का? मैं जिस नौकरी के लिए मुंबई गया था उसमें कभी मेरा मन नहीं लगा और मैं वहां खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, जिसके लिए बनारस बहुत अच्छी जगह है। बुजुर्ग: देखो बेटा, जीवन में खुश तो कोई नहीं रहता है, पर सबके अपने दुख रहते हैं, पर हम भी तो अपने मन का नहीं कर पाए, लेकिन जहां है संतुष्ट हैं। लड़का: तो आपको कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए? बुजुर्ग: अरे नहीं, स्कूल हमको पता कौन है। सा दुनिया को। या जी। अरे नहीं, हमको कौन सा दुनिया को बताना था, हम तो बस अपनी मेहरारू को कह दिए कि हम मुंबई गए थे, और उनसे कह दिए कि जो गाना है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो हम ही लिखे थे। बस वो खुश तो हम खुश। लड़का: अच्छी बात कही आपने, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना लैपटॉप खोलता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करता है। एक तो ये बात है कि डायलॉग्स कुड हैव बीन, थोड़ा सा डायलॉग लिखते में कंजूसी करना पड़ता जी। है ना। जी। यू हैव टू होल्ड इट एंड, है ना, जैसे मैंने पहले बताया था, तीन, अगर एक लाइन में जी। बात बनती है तो हाँ। 3 लाइन क्यों लिखी है ना। ये जी। अपना थिएट्रिकल इन्फ्लुएंस है जो हम्म। ट्रांसफर टू टेलीविजन, है ना। हम्म। टेलीविजन का डायलॉग है। आई थिंक फिल्म राइटिंग क्या 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 है, आपको स्क्रीन टाइम टाइम निपटाना है, इसे लंबा डायलॉग बोलते रहो, है ना। और हम्म। शूटिंग एक दिन में खत्म करो, एक एपिसोड, वो है। यहाँ पे नहीं हम्म। है ना ऐसा। तो जी। अरे अनस्टेबल। सो आप आपने जो ग्राफ वर्कआउट किया एकदम सही है ना। जी। बट थोड़ा सा स्मूदन इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा स्मूथ अगर होता तो अच्छा होता है जी। ना। जी। डायलॉग्स अगर कम होता तो अच्छा होता हाँ। है। एंड जी। एंड ऐसा रिजिक, एंडिंग थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगा यार। हाँ चार सर, वो थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए था हम्म, मुझे। मैं ये बताना चाह रही थी कि हाँ, जैसे वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी फैमिली में और हम्म, अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व थे। पर लड़का जो है वो अपने सपने के लिए ही जीना चाहता था, उसको जिंदगी से ही ये चीज चाहिए थी, तो उसने इस बात पे डिसीजन लिया। मतलब वो वर्ड्स खत्म हो गए थे, 500 हो गए थे, इसलिए मैं नहीं लिख पाई हाँ, कि वो चाहता ही ये था जिंदगी से। जैसे वो अपनी फैमिली में रहे, उन्होंने अपने इन्वेस्ट किया फैमिली में जो हाँ, भी। ये लड़के ने नौकरी छोड़ के फिर अपना पैशन ही फॉलो किया, तो वो ही हाँ, उसका। सही, करेक्ट करेक्ट है। बट देन इट हैज टू कम आउट इन द बॉडी ऑफ द फिल्म, इन दोस यस सर। 500 यस सर। 500, अदरवाइज हाँ। सडन, अच्छा ठीक है, रेजिग्नेशन जबरदस्ती लगता है ना। जी। 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 थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा लीड इन करना चाहिए। ठीक जी। है, जी सर। चले आगे चले, विल फिनिश। अंशुल, अंशुल इज देयर, या हाय अंशुल, या अंशुल, you're muted, can you hear us? Is Anshul there? Anshul is there now, I can see Anshul. So Anshul is not there responding, we'll go ahead. Jitin, is Jitin there? हेलो हेलो। Who is this? सर अंशुल, एक्चुअली सर मेरा ऑडियो नहीं हो रहा था ऑन, सो इट जस्ट रीस्टार्टेड। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, यस ठीक है सर। ठीक है ठीक है, वही देख थैंक रहा यू हूँ, सर। पिक्चर आ रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं अंशुल। सर okay, sir, I took the liberty of writing the title first. Crushed grass underneath a bullfight. The evacuation, rich and poor. There are people who worked their entire life to create an empire that will fall in front of their eyes, and for once their life they can't do anything to save it. There are people who have packed a little what they had and in their life and went to the neighboring country, knowing their supplies and money might last only a few months. And then what? It is difficult to leave your home, but what option do you have when the death storms into your house and when the death storms into your house, you save yourself and your loved one's life. uh, the things that come to my mind are, regardless of the money that you have, uh,
regardless of money that you what is the money you have, what is like to be a refugee. What? Uh, yes, sir. Yeah, go ahead. Yeah. Did money help or hopelessness was equal for both of them? How long could one survive in this war? People who survived, people who yeah, people were still trapped after Stay. the first. People who survived, people who were still trapped after the first evacuation, or the people who stayed to find their missing family, hoping that they might be still alive. Military flooding the streets, missiles and bomb exploding in the neighborhood. Did they survive, or did we only have the stories from somewhere else? Did they find their loved ones? Did they safely escape Ukraine? When things went sideways, did they see or become a victim of a crime by a fellow Ukrainian, when who himself was trying to survive? In this darkness, did they feel or see a moment of humanity? Being an innocent Russian in Ukraine. After living in a place for a decade, we call it a home. But after living for a generation, you can call it your country, right? Regardless of your origin country. But after the first hit by the Russian force, did the neighbors whom you might have known for years became your enemy? If you originated from Russia but lived in Ukraine and love it, uh, will they believe you? Did they survive? How horror? What horrors in humanity? How was the evacuation for them? Did they become a victim of a hate crime? Were there people who helped them? So, women, old people, and children were sent to the camps, but men had to fight. Everyone loves their country, but if you are certain that you will die when you go on the war, and you will never get to see or take care of your family, will you still fight? If yes, then go to war. But if no, then also you don't have an option then other than going to war. Life in a refugee camp, regardless of what what were all the people's regardless of what you were as a person, we are boiled down to the same level in the refugee camp. People who had nothing or nowhere to go. uh, we have known the pain of being a refugee, but life went on. How did people who never knew each other build a community to help and survive this horror together? How life always how life away from the home and away from the war was. Yeah. So in this uh, very couple of strong points that I feel, which may or may not go against you. One Okay. is this lack of historicity in this whole thing. You know, I don't know if it's a conscious one. That is one thing. I mean, for example, we don't know that both of them were the same country after reading this. You know, and then there is no. There are a lot of Russian speaking in Ukraine, and all those things historically, it's not there. And I think Yes, it's a yes. uh, it might act against you, or it's a positive point because you're dealing only with at 4 or 5 types of people. Yes. Is that it? Yes, It's an yes. impressionistic film, documentary film. What I foresee, it's an impressionistic film foresee of कौन सी है जो इवैक्यूएट किया गया एक तो वो है ना दूसरी कौन है जो रह गया ट्रैप्ड है वो है तीसरी कौन है जो रशियंस है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है जो ऑलरेडी रशियन स्पीकिंग मे बी यू हैव टू वर्ड इट रशियन Yeah, स्पीकिंग है ना Russian speaking people. people and stuff like that. And then with the women, you're concentrated on women and children and stuff like that. And then life in a refugee camp, So there are 5 specific set of people that you're concentrated on, Yes, sir. Again, here, that's fine. That's fantastic. That's what I liked about this film. But I'm not getting. But yeah, it's too early for you to for me to demand
from you that I'm not getting the film in hand, but it's too early for that. You could have, for example, uh, given a line or two about what about conditions of the people who stayed, you know, or Yeah, given yeah. a line about being innocent in a Russian speaking Ukraine, something like that. Specificity. I'm talking about a little bit of specificity. Otherwise, I personally liked it, except for the fact that there could be, even in this personal kind of a thing, there could be some historicity, है ना? Yes, 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 But yes. that's a personal opinion. आप किसका पास पेपर जाएगा वो अलग बात है ना? ठीक Yes, है? sir. Yes, sir. So we'll The go. only thing that I thought while writing this was कि हाँ, हमने in general films में ये देखा है कि बड़े बड़े nations की भी बारे में ही बात हो रही है वगैरह, but that's the reason I wrote the title, the grass crushed underneath the two bull fight. तो जो दो लोग लड़ रहे हैं उसके बीच में इन लोगों की, ये लोग जो पिस रहे हैं, तो उनकी कहानी क्या है, उनकी लाइफ क्या है, उनकी जर्नी क्या है, that हाँ, what I thought. हाँ. तो fair enough. इनकी पर्सनल कहानी का थ्रू, if it had come Yeah, in the body in those that 500 words, इनकी पर्सनल कहानी का थ्रू थोड़ा बहुत हिस्टोरिसिटी, तो देन वो मेरे लिए बात अच्छी बनी ना. okay, sir. I ठीक है. keep that in mind, sir. But that's entirely personal kind of a thing. There is no hard and fast rule here. ना? Yeah, we'll go for the next one. Yeah. Second question. If you wish to make it, okay. Go. I strongly agree with the quote by Jean-Luc Godard, who was the most influential filmmaker in the French New Wave movement. As a film critic, he had a very harsh feedback on. Guys, 1 second. I'll just interrupt in between. There are 10 minutes more left. So since I was also around, so whatever is being covered in 10 minutes is fine, and balance we will take up tomorrow. So don't worry, those people who could not be covered today. So tomorrow we will see that everything would be covered. Okay? Yes. So don't get upset. Thanks. 10 minutes and then we can wrap it up. Yeah. Yes. Sure. Okay. Bye-bye. Okay. As a film critic, he had a very harsh feedback on the realism in cinema, and this quote had a harsh taunting nature to the naive filmmakers that what I thought was. The reason why I stand with this statement is, if you wish to make a documentary, you have already tampered with the narrative of the truth because it is associated with you as per your perspective. So you might as well make it a fictional film out of it. We all have a perspective on a situation depending upon our own experiences. This clouds our judgment and brings your perspective of right and wrong. One must let the camera capture the truth before your voice as a filmmaker comes in. You don't wish to make a documentary in a certain way. You deep dive into the situation to seek the reality. The second part of the sentence is what I believe is an instruction to the correction for the filmmaker's mistake, and by making this fictional film into a real one. So if you want to nourish your fiction, you have to come to reality. So if you want to make your fictional story back to the actual documentary style, then you yourself has to first come back, leave your perspective aside and your interpretation of the truth behind, and clear your point of view on the incident. See the truth with the lens of the camera and ask question: why this happened, what triggered it, what is the ground reality, what does it tells about the humanity, how did this affect people near that incident, and how did it affect us as a society, and what's next for the people, for the affected people and us. In conclusion, if you wish to make a documentary, if you wish to make a documentary, it will be a fictional film, because you are making the truth in your head. But if you want to make this fiction a true documentary, get up, deep dive into the truth and the reality.
Yeah. So I quite like the first part of it. You talk about the subjectivity of the documentary. You know? So basically, the second part is what a little bit problematic. You know? So because basically you say what in one or two lines what you say in the last two paragraphs. Sir, what I wanted to say in the fiction. in the fiction part, so अगर सर अगर आपको ये जो फिक्शन जो आपने क्रिएट कर दिया, बिकॉज आपने वो माइंड में तो बना लिया कि ये दिस हैपेंड, बट अगर उस फिक्शन को आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो आपको वहां पे जाके और कैमरा के लेंस के थ्रू देखना चाहिए. व्हाट आई मीन इज कि आप सिट बैक बिहाइंड द कैमरा एंड सी व्हाट द पीपल आर सेइंग. उनसे क्वेश्चंस पूछो ऐसे जो आपको वहां की उनकी कहानी बताए, उनका पर्सपेक्टिव बताए, रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सपेक्टिव एज अ फिल्म मेकर, बिकॉज दैट कैन कम लेटर ऑन. बिकॉज हर डॉक्यूमेंट्री में एक डायरेक्टर का स्टाइल होता ही है. तो दैट इज व्हाट आई फेल्ट कि अगर उस फिक्शन को आपको रियलिटी डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट करना तो आपको रियलिटी में आना पड़ेगा पहले. हाँ नहीं, there is a slight maybe there is a slight misunderstanding of the second part of the question. Okay. ये दोनों एक्चुअली दोनों पैराग्राफ में पूरा ऐसे में आप 500 पॉइंट में डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. नॉट इवन टॉकिंग अबाउट फिक्शन. You know, basically you're talking about documentary and then you're talking about stories that you want to make fiction, but stories that are fiction, but you want to make into a document. Is that what it is? No sir, what I thought was what I feel actually is कि अगर डॉक्यूमेंट्री बनाने का सही तरीका इज go to the ground reality and वहां पे आप देखो. बिकॉज अगर आप घर पे सोच के इफ यू ओनली विश दैट आई वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट दिस, तो आपने अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा क्लोज कर ही लिया है कि अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ. और अगर आप वहां पे फिर उसके बाद जाओगे तो आप काफी क्लाउडेड जजमेंट के साथ जाओगे. यू थिंक अबाउट अ सिचुएशन दैट यू वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री, वहां पे जाइए, वहां का एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देख के, लोगों के पर्सपेक्टिव देख के उस कहानी का जो सच है वो एडिट रूम में फिर डिराइव कीजिए डॉक्यूमेंट्री में. सो देन या व्हाट अबाउट डॉक्यूमेंट्री. फिक्शन? व्हाट अबाउट फिक्शन? व्हाट अबाउट फिक्शन सर? व्हाट अबाउट फिक्शन? वो कैसे डॉक्यूमेंट्री एलिमेंट हेल्प करेगा फिक्शन को, या हाउ डज okay, actually I thought this statement in a different way. Sir, fiction का effect documentary पे है sir? You mean? Yeah. So what the question is, basically, if you wish to make a documentary, you should go automatically to fiction. Yeah. है ना? तो if you आपने सही पकड़ा उसको, है ना? Yeah. इसको आपका आर्गुमेंट जो है, I can understand your argument. Okay, I got it. The second part, अगर आपको अपना fiction को nourish करना है, that is a different thing then. Okay, I thought these two sentences are connected. Okay, so हाँ, तो then as per me, because fiction को अगर आपको nourish करना है तो आपको reality में जो actual चीजें हुई हैं आपको लेने पड़ेंगे, उसका content. A film could be only like connect तभी होगी जब लोग connect होंगे वो reality देख के, चीजें देख के. कि अगर मैं किसी and then convert into fiction, ऐसा. then that last part was missing, है ना? so जैसे हम previously जैसे हम अशोका के बारे में बात कर रहे थे, अगर अशोका के बारे में आपको एक फिक्शनल कहानी भी लिखनी है तो भी आपको पहले देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा रियलिटी में क्या हुआ था. देन यू कैन मेक अ फिक्शनल फिल्म इंस्पायर्ड बाय इवेंट्स लाइक दैट. ठीक है, ये तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का इश्यू है. ये जो बात कही है ना आपने, वो इसमें नहीं आया, है ना? Maybe a line here or two बाद में आप, है ना? Make sure that your thought process is conveyed. Okay sir, thank you sir. Now I'm getting you not from this write up but from what you have said. But unfortunately वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, है ना? definitely. Ram, ठीक है. Ram, can you hear me? Ram, can you hear me? We'll finish. Yeah. Okay sir. Excuse me sir. Wait. Okay. Please write down your question, whatever somebody has to ask. There is also tomorrow, and then after that there is a next week, etc., etc. Okay, so we should follow a strictly time because he has been commenting for last 2 hours. I thought in between I will remember to interrupt and give a 10-minute break, but somehow I just forgotten. So the classes would be only 2 days a week. 2 days a week. It is being very, very clearly mentioned in the mail. So weeks, another week the Ranjan would come, then another week the Ram would come.
So whatever is left today, tomorrow, very Okay. categorically, the time would be divided between the rest of the people. Whosoever has submitted the assignment, those who have skipped, if time like this Moyen boy, he has skipped. He went to sleep after submitting his assignment. So if he's sleeping, keep sleeping. There are many people who are awake right now at 9 o'clock. So those people would follow, and as simple as that. Sir, Okay, sir. So every assignment will be given per week. मतलब per week correct. कुछ essays लिखने को दिए जाएंगे और ये सब. Ananya Okay, sir. Das, let me tell you, tomorrow I am going to call your father and mother that you have been wasting their hard-earned money and did not submitted your assignment. Ananya Das, can you hear me? Sir, I mailed, sir. I Where mailed did you actually mail? at Where 4. did you mail? Sir, on Where that did you mail? Ramchandra sir, I guess. Ramchandra You sir. should use your brain. You don't have a brain to use it. Everybody has mailed at the office at the rate of craftfilmschool.com. Oh, You, craft. Oh, no. Oh, Ananya Das, sorry. you did not hear it properly. Sorry, sir. But I mailed. If you do the same damn thing under the sun in the exam, you will fail again this year. Okay? Sir, Somebody I am else wants Ajay. to say something? Yeah. Sir, I am Ajay. Sir, I couldn't get the assignment. It doesn't matter. Doesn't matter. It does not matter. If you fail to submit, forget about it. Let other people. Sir, how can I submit No. get? I gave you a day and then I extended it. Even after the extension, you people were sleeping. So keep sleeping. Doesn't matter. FTI has only 10 seats. They need 10 students. They don't need 20, 30, 40. You have chosen a wrong profession. You don't understand the meaning of discipline. Do some computer science course and keep doing it. This is a filmmaking. Time is the most important thing here. If you don't understand, I will not boil my blood. This is the first and last time I am online. After today, I will not be here. Are you getting me? There would be teacher. They will discuss only those people who have submitted that assignment before the deadline. Clear to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Clear. Thanks, Ram. Thanks, Ram, for sparing your time. And tomorrow we'll take up whatever is left over and allocate the time because sometimes people keep talking left, right, east, west, north, south. So let them speak only what they have written, which you categorically mentioned in between your discussion. Read what you have written. So let them read, and then probably you will comment on whatever is the way it need to be done. Because many of them, since it is a first time for them also and for you also, so in between the discussion goes left, right. So let's be more focused tomorrow, and I would not be here tomorrow, so I'll discuss with you how to go about it. So thank you very much for today's time, gentlemen, and tomorrow we will resume. Okay? Yeah, sure. So discussion. Thank you guys. The discussion was fine. Perfect. Thank you, sir. It was nice to you, meet sir. you. Nice to Yeah, interact. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir.